We will be definitely benefited by your talk and discussion. And also I thank Dr. Dinamandhu Sahu sir, our team leader ji achhanti tankara leadership रे amar chalichi ei jo program ta. Dr. Aditya Mahapatra to definitely he is the brain and heart of this program, and UNICEF support. It is there is no word to speak about their support. They are always with us, Dr. Meena and the team. And आमको तो टाइम मिलुनी सबु कथारे बसिबा पे, बट सेमाने परस्यू करछन्ती बारंबार. तेणु थैंक यू ऑल. आज एक्चुअली हमरो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमें सिलेक्शन हेची. We are almost covering all the topics related to maternal and neonatal health. Our basic aim, everybody knows, to reduce our maternal mortality ratio and the infant neonatal mortality rate, and as a whole child mortality rate. So we are covering all the topics which are important for the grassroots level workers, pediatricians, gynecologists, and so many other participants. So this time we are having one of the important topic is APH, antepartum hemorrhage. As all know, hemorrhage is one of the important cause of maternal mortality. Though PPH is more common, APH is also not less a cause contributing to the maternal mortality. So it is also a very important topic, well selected. Different types of what is APH, what different types, how to manage, etc. will be dealt with by the resource person, Madam Achandi Kahiba. I am not going to interfere in those things. And the second most important from the pediatrician point of view is almost a forgotten entity by everybody, that is developmentally supportive care of the newborn. We are concerned, though we are concerned with survival, we also very much concerned with healthy survival. That is very important. And this aspect is being by most of that is development of and Dr. much more about this, and our in utero surrounding. In utero surrounding is very comfortable for the newborn baby for the different aspects. And once the baby is delivered, the baby is exposed to many non-clean feeding. So many things are concerned with it. So that will be dealt. Some great man has told, the genes are the bricks and mortar to build a brain, but the environment is the architect. So today's Sutos, he will be talking about these are the and the arrangements that are there in the different programs in our community. I would like his valuable words to inspire us all. Dr. Dinamandhu sir. Respected Madam Shama Kanungo, Dr. Vijay Panigre, DFW Odisha, and Dr. Aditya Mahapatra, Ritanjali Madam, and two speakers, Asutosh, my younger brother, and Kritilekha Madam. I welcome all the participants, those who are attending from different districts and sub-districts. Discussion पूर्व आम last time discussion करथिले मैडम को मैं already discussion करिछि, and today topic is related to that APH पे आमे जो कहिथिले मैडम हमर that is the initiation of Shama madam. आमे already NSG instrument किणी किरी देई देइछु. प्राय more than 200 instrument has been supplied to the all districts, and they have supplied to 108 and to the CSs, but it is dumped in the store so that nobody knows. केही जानि ना दे पर्यंत मु काली डिस्कशन करथिली. लकीली DFW सर मो पाखरे थिले. मु कहिछि मैडम मु सेही CD टा कलेक्शन करके आपन को देबी, and you will take little pain, and you are always with us and always giving guidance.
आपण प्लीज गोटे क्लास अरेंजमेंट करंतु विथ मैनिकिन आमे एससीबी मेडिकल कॉलेज रु देखिबा तेनु एपीएच फोरम रे भी देखि परिबा मैडम मैनेजमेंट ऑफ शॉप गोटे टॉपिक रखी that I will issue a letter under the signature of MD NHM so that all the participants will definitely attend this meeting, and that will be just like a government order that you have to attend, because the instrument has been supplied to you and it is the high time to utilize the instrument, because instrument is there and patients are dying, so there is no need of putting instrument in your store, dumping over there. तेणु आमे एपीएच रो डिफरेंट कॉजेस अछि तेणु आमे लाइक अदर थिंग्स VHN रो आमे जदि स्क्रीनिंग करि परिबा जे मेनली गोटे एनीमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द एपीएच, बिकॉज एनीमिया जदि हुए प्लासेंटल साइज बढ़ी जाए, समस्त जानि छथि प्लासेंटा साइज बढ़ी कि इट कम्स नियर टू द ऑस एंड व्हेन ऑस डायलेट देयर अकर ब्लीडिंग, दैट इज वन ऑफ द कॉजेस. सो फॉलिक एसिड एंड आयरन डेफिशिएंसी, सो आमे एनलिस्टेड करबा को पड़िबा प्रेगनेंसी रे एचएनडी सेशन रे केते एनीमिक पेशेंट अछंती, जदि हमर गोटे होछि लाइंग लिस्टिंग ऑफ एनीमिया पेशेंट आमे करि पारुने. आमे ऑलरेडी सेमते मो ए परिमाण मध्ये आहुरी कहूछि आमे डिजिटल हेमोग्लोबिनोमीटर ऑलरेडी मैडम दे दैछु, किंतु दुखर कथा से भी सेंटा स्टोर रे पड़िछि, माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे पड़िछि, डिस्ट्रिक्ट स्टोर रे इट हैज नॉट बीन इश्यूड टू द पेरिफेरी and not been used. Still then we are using the Saheli and bluffing about the estimation of hemoglobin. So DFW sir already गोटे चिठी देइछंती, तेनु जे जतेबेले आमे जाउछु बा जो फॉर्म हला समस्त कहंतु हेमोग्लोबिनोमीटर केमते डिजिटल हेमोग्लोबिनोमीटर यूज करिवे एंड एनएसजी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज करिवे. तेनु antepartum hemorrhage is one of the leading cause of maternal death, and if it is not properly managed ताहले एंटीनाटल ब्लीडिंग जदि एपीएच ब्लीडिंग हला त पेशेंट मरि जिबार बहुत चांस अछि जदि हमें प्रॉपर केयर न नबा. सेति पे हमें करूछु पीएमएस में डे रे प्रति मास 9 रे जो पीएमएस में डे रे होछि, हम सेति कहूछु एटलीस्ट देयर शुड बी वन्स अल्ट्रासोनोग्राफी ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, सो दैट आपण माने जानि परिबे मां कोठी ए छुआ कोठी अछि, केतेटा छुआ अछंती, छुआ विकलांग अछि ना नाही, एवं फुलर सिचुएशन प्लासेंटल सिचुएशन वेदर इज पोस्टेरियर इट इज लो लाइंग, सो दैट आपण को मन भीतर गोटे आसी जो भविष्य डेलीवरी केमते हेबो एवं भविष्य कोन से मा प्रॉब्लम हबो. तेनु से विषय विशद भाव रे हम सहित डिस्कशन करिया भी कीर्तिरेखा मैडम अछि जे हम प्रोग्राम सहित डीपली इन्वॉल्वड. हम मैडम को रिक्वेस्ट करी, मैडम आज दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, काइंडली हमर जो स्टाफ नर्स माने जी अटेंड करछंती तांको कहंतु व्हाट इज द साइन एंड सिम्पटम्स, कोठी से माने पीवी करबे कोठी पीवी न करबे, एंड हाउ विल डायग्नोज एपीएच एंड एक्सीडेंटल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्सीडेंटल हेमोरेज, एंड केमिते से एपीएच केस को जदी होउची ताहले नियर बाय सेंटर को केमिते रिफर करबे विथ शॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन, एंड जते बेले रिफर करबे से हमर जो रिफरल स्लिप पठेबे से जो इंस्टीट्यूशन को जीवो से इंस्टीट्यूशन को कौन इंस्ट्रक्शन देबे, सो दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी रेडी, लाइक प्रिपरेशन ऑफ ओटी, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड, ऑल दिस थिंग्स शुड बी रेडी, अदरवाइज सेठी जाके पहुंचला को नोबडी विल बी देयर, सर्जन विल बी नॉट देयर, एनेस्थेटिस्ट विल बी नॉट देयर, blood bank has not opened, so all the things will go once again as if the patient has reached first time to the institution. So that is the most critical part, important part. I would request our eminent speaker madam Kirtirika Mahapatra to look after the subject, so that amar jette achandi ground level ru kam ame midwifery ki besi important doche to conduct the normal delivery, so seman kemite ta diagnose karibe ebong kemite darkar padle patient ko pathaibe ebong pathela bali kon precaution nebe. Other part जोटा childhood development following delivery जोटा हमर किंती आशुतोष हमर कहिबो, आशुतोष जे ब्रिलियंट स्पीकर आपण माने जो माने जानि नथिबे मु ता सहित करिछि 2 वर्ष आज सीएम मो पाखरे से काम करथिला म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल, हे आज very vast experience and academically he is a brilliant student, and unluckily he has left the government job without our advice. तेणु मु आज आशुतोष कहिबी, so long as you are there and I am, and we Aditya, myself Aditya and Narayan Panda are there, please go, please with us, so that we will take you in all
the meeting or this VC, so that I'm there for you always. जो ज्ञान अच्छी एटलिस्ट आमर डिपार्टमेंट रो लोक माने जानि परिबे मोर स्टाफ नर्स माने जानि परिबे हमें चाहू से नॉलेज टाको दबाकू तमे भाबनी जे यू आर ओनली प्राइवेट प्रैक्टिशनर you have grown up from the state government fund and budget and हमें तुम्हारे बड़ भाई हिसाब रे सब बेले तुमको डाकुचू तमे आसो oftenly we discuss with Aditya and Dr. Ponda about you and I think your input to the health department not only in this VC also in the programmatic and planning will helpful and I welcome once again to you to this forum. Please give your valuable advice and opinion. As you know, these are the staff nurses who are attending. Doctors are there. Doctors must be knowing something, but there are something to know. Doctor also to know, and the staff to know. I think you will put on the vital points in colloquial Odia language. Samaste jani paribe. I welcome both the eminent speakers to this forum, and I also welcome our Dr. P.K. Sahu, who is very senior, and I know him. He might not knowing me, but I know him because I am a friend of Ravi. He's president IAP now. So I welcome all the. I know you, sir. members. I know you. Deraman, sir, I know you. Thank you, sir. Thank you. So hand over to Madam Shama Madam. Okay, thank you very much, Dinandu sir, for your encouraging words. And about NASG kit, we'll go ahead with it. And Chennai has reduced its maternal mortality only for this kit. Rapidly. So thank you very much for procuring all those equipments. We'll go ahead on next. Madam, it has procured, it was distributed. I will give you the CD and we'll discuss how to percolate the things to the ground level. Thank you, madam. Thank you very much. Okay. Now I request my student, one of my brilliant students and committed obstetrician, Professor Kirtirekha Mahapatra, and she is a good researcher and one of the best teachers also. She is an EMOC trainer now, and her interest is in critical high-risk pregnancy as well as urogynecology, both very close to my heart also. And we have given her a very important topic. I mean, बहुत important topic देचु. PPH निश्चय number 1 killer. किंतु ता पछे पछे रही antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage जोगु PPH हुए. Antepartum hemorrhage को हमें PPH हम 2 घंटा भीतर हमें जब किसी न करिया मरी जबो. Antepartum hemorrhage हमको आउ टिके अधिक समय दिए 6 रु 12 घंटा भीतर समय दे. आ भीतर हमें केमिति माटा को रक्षा करि परिबा ता भीतर थिबा शिशु टिके रक्षा करि परिबा समस्त हमें बहुत सजग रहिबा मे भी प्रकृति रे हमें निजु सब बेले योद्धा बोली मन करिबा हमें केमिति मृत्यु रक्षा करिबा ए माटी की एवं ता भीतर थिबा शिशु टिके আজি हमें प्रथमे सुनिबा हमरो प्रोफेसर कीर्तिरेखा महापात्र से हमको कहिबे Dr. Shubhakanta will present the slides. तुम्हें follow करियो से slides को. Once you say next slide, then he will change. Okay, madam. Thank you, madam, for your kind words. From the outset, I must thank all the organizers for giving me chance to speak on such a nice subject, which is very close to my heart. Okay, madam, so it is antepartum hemorrhage. Next slide. Can I operate from my side? Hello. Next slide. Okay. So antepartum hemorrhage ta kon? Ame janu che. Please unmute. There is so much of noise. Okay. So antepartum hemorrhage hela. Host, please mute other. समस्त को म्यूट कर दियंतु मीना मैडम समस्त को म्यूट करंतु एक्सेप्ट द स्पीकर म्यूट कर दियंतु गया सर शुभकांता CJ2 Pro जने के अछंती कथा होचंती antepartum hemorrhage हला bleeding from or into the genital tract सेटा ब्लीडिंग ता बाहर को भी आसी पारे किंबा रही भी जाई पारे 6 हम ओडिया मास हिसाब रे 6 मास रु डिलीवरी जाए
छुआ डेलीवरी हवा जाए 6 मास रु छुआ डेलीवरी हवा जाए एटा बेरे 3 रु 5% प्रेगनेंसी रे देखा जाए गर्भवती महिला भितर 100 रु 3 रु 5 जन करे एटा देखा जिवो एटा खाली जे मैटरनल मोर्टालिटी पाई नंबर 1 कॉज सेटा इट इज नॉट नंबर 1 कॉज बट इट इज हेमोरेज इज द नंबर 1 कॉज हेमोरेज नंबर 1 होची पोस्टपार्टम नेक्स्ट टू दैट इज एंटीपार्टम आउ गोटे एंटीपार्टम हेमोरेज आउ गोटे बहुत बाजे जिंस हला जो पेशेंट रो एंटीपार्टम हेमोरेज हेइथिबो से पेशेंट डिलीवरी ला पर टिके ब्लीडिंग हेले भी सी विल डाई ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज तेनु सेही सब केस रे एंटीपार्टम हेमोरेज पेशेंट को डायग्नोज करबा तांको केमती मैनेज करबा तांको प्रॉपर्ली केमती गियर करबा फॉर ए बेटर डिलीवरी एंड बेटर आउटकम सेटा हला हम काम आ एटा खाली जे मां पई असुविधा से नु हमर शतकड़ा 20% प्रीटर्म बेबी माने जो माने समय पूर्व डिलीवरी होचंती लाइक 37 वीक्स पूर्व से माने ए एपीएच हेबा द्वारा से होचंती केतेटा मनु को होचंती केतेटा आमे मार छुआर सुविधा पाई का हमु करिया को पडुची आउ गोटे जिनस हला आमे एटा को प्रेडिक्ट करि परिबानी को केस रे एपीएच हबो को केस रे न हबो एंटीपार्टम हेमोरेज को केस रे हबो न हबो एटा हमें 100% केस रे प्रेडिक्ट करि परिबे रादर मोर देन 70% केस रे हमें प्रेडिक्ट करि परिबानी तेनु सब बेले हमें प्रिपेयर थिबा दरकार एमती गोटे केस रे आसीबो एंड हाउ टू मैनेज इट नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट सो कॉज गुडा का कोन केतेटा प्लासेंटा जोगु हुए एंटीपार्टम हेमोरेज आउ केतेटा आउ जगह रु ब्लीडिंग हुए जोटा को हमें ए सही समय रे हुए प्लासेंटा रु कोन हुए मोस्ट इंपोर्टेंट हैला प्लासेंटल अब्रप्शन जोटा नॉर्मली प्लासेंटाटा अच्छी किंतु हठात प्लासेंटाटा यूट्रस रु सेपरेट हे गला आ से जगह रे ब्लीडिंग हैला आ से ब्लडटा आइदर जमा हे गला और तळगु आसिला आ उठला प्लासेंटा प्रीविया जोटी फुल्लटा बा प्लासेंटाटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट रे इम्प्लांट हेची नॉर्मली एटा अपर यूट्राइन सेगमेंट रे इम्प्लांट हुए जदी तळुको इम्प्लांट हे गला सेटा होची जेतेबेले लोअर सेगमेंट फॉर्म हबो कि पेशेंट लेबर को जिवो सेतेबेले लेबर जिवा पूर्वरु भी लेट प्रेगनेंसी रे सेटा कोन ना सेपरेट हे जिवो यूट्राइन वाल सेपरेट हेले ब्लीडिंग हबो आ गुटला भाषा प्रेविया ता जानिबाटा बहुत इंपोर्टेंट कारण ए आइडिया नथिले आमे छुआ को बंचै परिबानी भाषा प्रेविया माने जोठी छुआर भेसलटा फिटाल भेसल मेम्ब्रेन रे जाइथिबा और सेटा अस ऊपर इंटरनल अस ऊपर क्रॉस करथिबो जेतोल मेम्ब्रेन रप्चर करबो ता संगे भेसलटा फाटी जिवो और ब्लीडिंग भी हबो आ से ब्लीडिंग टा टिके अल्प समय भितर फिटाल डिस्ट्रेस और फिटाल डेथ भी करतबो छुआटा पेट भितर मां पेट भितर मरि जिवो आउ गुडा होची हेवी शो आमे जानिचु डिलीवरी पूर्वरु वन ऑफ द लेबर सिम्पटम हैला शो माने नाळुआ आइ के टिके रक्त मिसा डिस्चार्ज हुए भाजन थ्रू भाजाइना आम ताको सो बोली जानिचु किंतु बेले बेले ए ब्लीडिंग टा टिके अधिका हुए आ पेशेंट ताको बहुत ब्लीडिंग हैला बोली कंप्लेन कला सेते बेले आमे ताको कहते हेवी शो नॉर्मल शो टा हम समस्त जानिचु कि हेवी शो टा को पेशेंट भी कहबो जे बहुत ब्लीडिंग हे गला आमे ताको एंटीपार्टम हेमोरेज मे बी अब्रप्शन प्लासेंटा प्रीविया किछि भाबेबा सेटा को डाउट कॉज आउट हला सर्विक्स डिजीज लाइक सर्विसाइटिस सर्वाइकल पॉलिप सर्वाइकल इरोजन इवन कैंसर सर्विक्स भी प्रेजेंट करि पारे एपीएच रे माने लेट प्रेगनेंसी रे ब्लीडिंग नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट previous to that so abruptio placentae na sorry या परटा हां separation of normally located placenta after 24 weeks and before delivery of the baby सेटा जोटा हमें कहिथिले प्लासेंटा टा एठी आपण चित्र रे देखि परचंती प्लासेंटा टा नॉर्मली सिचुएटेड अपर सेगमेंट रे अछि सेटा फॉर सम रीजन सेटा ता भीतर ता तळे थिबा भेसल टेप्स पैरालाट्रिट रे कोनटे रप्चर करि गला मोस्टली एटा ट्रॉमा की हाइपोटेंशन इति पई हुए करि गला से ब्लड टा डिपोजिट हे कि से प्लासेंटा को आउरी डिलीवरी आउरी सेपरेट कर देला यूट्राइन वाल रो आ से जो ब्लड टा इट मे कम एटा थ्रू रे आसी पारे मेम्ब्रेन आउ प्लासेंटा यूट्रस भीतर आसी किरी थ्रू ऑस हे कि बाहर को ब्लीडिंग आसी पारे पेशेंट कंप्लेन कर पारे ब्लीडिंग हैला बोली किंबा एटा न आसी भी पारे सेटा सेमती सेपरेट करी ब्लंड हेकी रहितबो ए कन्सील ब्लीडिंग टा सबटु बेसी प्रॉब्लम करे
कहीं ना ए जो ब्लीडिंग टा हैला पेशेंट जानी परिबनी ब्लीडिंग हैला पेशेंट कंप्लेन करबनी किंतु भितर ब्लड लॉस टा बहुत अधिका हेजिवो बेसी अधिका हे गले सेटा छुआ को भी मार दबो आ ता छटा ब्लड टा अधिका हे गले सेटा क्लॉट कर जिवो आ से क्लॉट रो टिश्यू फैक्टर गुडा को जेते बेले ब्लड रे मिसिबे मां रो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जोटा कहंती मां ब्लड रे मिसिबे तापर से डीआईसी गोटे कोआगुलोपैथी करंती गोटे ब्लीडिंग डिजॉर्डर भी करि पारंती आ सेट इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सो कन्सील्ड हेमोरेज रे ब्लड ब्लीडिंग बाहर को हबनी सेटा प्लासेंटा आ यूट्रस मझिरे ब्लड हिबाटोमाट हेकी रहइबो रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट टे एंड रिबिल ब्लीडिंग रे ब्लड टा बाहर को पळे आसीबो आ रिबिल ब्लीडिंग रे रिस्क टा सेत कम किंतु मिक्स्ड भी हे पारे किछि पोर्शन रहि जिवो आ किछि पोर्शन बाहर आसीबो पेशेंट कंप्लेन करिवो ब्लीडिंग हेची आ केतेडी कंप्लेन करिवे आ किछि रहि जाइतिबो सो इन दैट केस जदी कन्सील्ड ब्लीडिंग हला कोन हबो यूट्रस रो साइज टा बढ़ी जिवो सेटा हमर ए चित्र रो आपण अनुमान कर परिबे नेक्स्ट स्लाइड कोन रिस्क फैक्टर टा हमें जानि थिया दरकार सब ए केस को ठीक रे प्रिपेयर करबा पेशेंट को आगुरु जणेबा ब्लड बैंक ब्लड सुविधा करबा किबा जोठी हमें बेसी आशा करूचे ताको हायर सेंटर को रेफर करबा तेनु हमें रिस्क फैक्टर तक जानिबा किंतु मो आगुरु भी कहिछि आ वर्तमान भी कहूछि रिस्क फैक्टर 70% केस रे किछि रिस्क फैक्टर न थाए सबु नॉर्मल थिबो हठात ब्लीडिंग हबो लेट प्रेगनेंसी रे सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स आगुरु जदी अब्रप्सियो प्लासेंटी तार हेतिबा आरो प्रेगनेंसी रे गोटे मल्टीग्राविडा तार आरो थर कहला मोर एमती ब्लीडिंग हला ता भितरे रक्त पिंडला रहि जाइतिला मो छुआटा मरि गला से हिस्ट्री भी दे पारे जदी तार आगुरु मैटरनल हाइपरटेंशन अछि एनी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन लाइक क्रोनिक हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन हे पारे किंबा सेटा प्री एक्लाम्सिया हे पारे किंबा प्री एक्लाम्सिया सुपर इंपोज ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन हे पारे सेई गुडा केस रे से मानकर ए जो वेसल रप्चर करबा रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट हबा एंड कन्सील्ड हेमोरेज अब्रप्सियो प्लासेंटा हबा चांस ता बहुत अधिका आ इट इज सीन इन एडवांस मैटरनल एज जेते अधिका हबो बहुत बड़ा रोग सेते बढ़ी जाय अब्रप्सियो प्लासेंटा भी अधिका हो आ गोटे ट्रॉमा जेते बे धरो घरे किछि गंडोळ हैला किंबा कोठी एक्सीडेंट हैला किंबा कोठी से पड़ी गला ऑल दिस थिंग्स से माने ए ट्रॉमा गुडा भी प्लासेंटल वेसल रप्चर भी करंती एठी किंतु ट्रॉमाटिक वेसल रे एटा मोस्टली जो गुडा का हाइपरटेंशन रे हुए ऑल मोस्ट ऑफ द ब्लड आर मैटरनल ब्लड किंतु ट्रॉमा रे जोटा हुए सेटा सिमिलर ता प्लासेंटा भी फाटी जाई पारे छुआ भी बेसी असुविधा रे रहि पारे आ अन्य जिंस लाइक स्मोकिंग कि मद के पिला कि कोकेन अब्यूज एगुडा करे भी अधिका रिस्क अछि किंबा जदी शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड रे बुली जिबा एगुडा एते कॉमन न शॉर्ट अम्बिलिकल एटा एते कॉमन न आ गोटे जिंस हला जदी सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस हला जद गोटे हाइड्रामियस केस रे बहुत फ्लूइड थिला आपण ताको हठात मेम्ब्रेन रप्चर करि गला किंबा आपण एआरएम कले ताले कोन हबो यूट्रस टा हठात साइज टा कमी गला आलु को प्लासेंटा टा सेपरेट हे जिवो सेटा हला सडन डिकम्प्रेशन एनी केस ऑफ पीआरओएम परे एटा हे पारे किंबा फास्ट ट्विन टा डिलीवरी हे गला परे यूट्रस रो कंटेंट वॉल्यूम टा कमी गला यूट्रस टा कांटेक्ट करला प्लासेंटा टा सेपरेट हे पारे सेकंड बेबी रो प्लासेंटा सेपरेट हे प्लासेंटा फिटल डिस्ट्रेस भी हे पारे आ जदी इम्प्लांट 5 जदी प्लासेंटा टा किंबा फुलोटा जदी फाइब्रोइड ऊपर इम्प्लांट हेची ताहले भी अब्रप्शन रो चांस अधिका आ आमे जोडा डिस्कशन करचे बहुत केस रे कोज टा भी जणा पड़ेनी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज क्लिनिकल फीचर कोन रे से माने आसीबे कोन रे आपन पाखु आसीबे भाजनल ब्लीडिंग तो समस्त आसीबे दैट इज एपीएच एंटीपार्टम हेमोरेज किंतु भाजनल ब्लीडिंग ता केमति थिबो एटा होची टिके डार्क जेतु रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट रही कि सेठु आसी एटा डार्क ब्लड टिके रहिबो डार्क ओल्ड ब्लड प्राय आ एटा जेहेतु सेपरेट हेची पेनफुल होबो से जगहटा पेनफुल रहिबो आ सेठी हाथ मारले टेंडर भी रहिबो आपण जदी पेट ऊपर तार हाथ मारबे ताको पेन होबो आ पेशेंट भी कहइबो मोर ब्लीडिंग हैला मो पेन हैला तापर ब्लीडिंग हैला एटा हला इंपोर्टेंट हिस्ट्री आ एब्डोमेन टा टेंस आउ टेंडर थिबो आपण देखिबे जदी कन्सील्ड हेमोरेज रे आस्ते आस्ते फंडल हाइट टा यूट्रस रो साइज टा बढ़ी जिवो काइना ब्लड टा बाहर को आसेनी ब्लड क्लॉट टा रेट्रोप्लासेंटल जमा हे के आछि आ यूट्रस टा साइज टा सेंसर बढ़ी जिवो दैट देयर मे बी fetal distress तमाने छुआर fetal heart टाकिकार्डिया अधिका हे जो 160 रो अधिका हे जिवो कि 110 रो कम हे जिवो आपण धरो स्टेथोरे सुनचंदी किंबा डॉपलर भी सुनिबे fetal distress अछि माने इट इज मोर इन फेवर ऑफ abruptio placental काहेकि ना ये रे
प्लासेंटा प्रीविया रे fetal distress हुए किंतु लेट से हाँ बहुत रे प्लासेंटा सेपरेट हो आउ गोटे कथा ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स मु आगु कहि जदि से रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट टा रहिला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट इन ब्लड रे मार ब्लड रे मिसिला ताले इट मे गिव राइज टू DIC गोटे कोआगुलोपैथी गोटे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हे पारे तेनु सेटा पेशेंट मे बी सम पेशेंट दे मे कम unusually they may come with nose bleeding hela कि दांतर ब्लीडिंग हला ब्लीडिंग ताकर मे बी फर्स्ट फीचर हे पारे कारण कन्सिल्ड हेमोरेज रे बाहर को आसी नथिबो एंड एक्यूट रेनल फेलियर जोटी बहुत ब्लीडिंग हुए ब्लड लॉस हुए सेठी रेनल फेलियर होबार रिस्क भी अधिक रही छै आ गोटे जिंस अल्ट्रासाउंड आमे मे भी कहि पार अल्ट्रासाउंड तो तार करथिलु अब्रप्शन तो देलानी आमे किंतु भाबु सेटा अब्रप्सियो बोली किंतु अल्ट्रासाउंड रे अब्रप्सियो प्लासेंटी सब केस रे जणा पड़ेनी कहीं ना फ्रेश ब्लड टा आइर हाइपोइकोइक हम और आइसोइकोइक हम तेणु सोनोलोजिस्ट से जानवा भी कष्ट जे एटा ब्लड क्लॉट कि प्लासेंटा आछे ओल्ड ब्लड हेले ही सेटा हाइपोइकोइक क्लियरली जना पड़िबो तेणु अल्ट्रासाउंड जोटा आमे करछे अब्रप्सियो प्लासेंटी रे जदी इमिडिएटली आपनकर लेबर रूम पाखे अल्ट्रासाउंड मशीन टे अछि आपन करि परिबे ताले करिवे जदी सेटा होछि मेनली टू एक्सक्लूड प्लासेंटा प्रीविया कारण प्लासेंटा प्रीविया अब्रप्सियो प्लासेंटी तांको मैनेजमेंट गुडा भी अलगा तेणु आमर से दुटा डिफरेंस जानिबाटा निहाती जरूरी किंतु अब्रप्सियो प्लासेंटा को आपण सब बेले जानि पारंती किंतु सब बेले कंफर्म करि परिबेनी किंतु प्लासेंटा प्रीविया यूजुअली अल्ट्रासाउंड रे जणा पड़िबो नेक्स्ट स्लाइड प्लासेंटल अब्रप्शन रे कोन कॉम्प्लिकेशन हे पारे मार बहुत ब्लीडिंग हैला मैडम मा सबकू पळेला किंबा ब्लीडिंग जोगु साइनसेस ओपन अछि amniotic fluid embolism हे गला और acute renal failure we have discussed आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस एटा सेथि बेन ताकू लिखिची कैपिटल लेटर रे एटा हला पोस्टपार्टम हेमरेज सबु एंटीपार्टम हेमरेज पेशेंट जो मन का ब्लीडिंग हेची से माने एनीमिक वॉल्यूम डिप्लीटेड एंड दे आर मोर प्रोन फॉर PPH एंड PPH हेले से मानकर डेथ रो चांस भी अधिका तेनु आमुको सबु एंटीपार्टम हेमरेज को इमीडिएट मैनेजमेंट आ प्रॉपर मैनेजमेंट नकले हमर PPH होबार चांस बहुत अछि पेशेंट को हमें मे बी PPH रो बंचे दे पारु किन PPH रे मर जो पेशेंट तेनु हमको से अनुसार ठीक रे मैनेज करिया को पड़िबो आ PPH टा को जगियो पड़िबो आ गुटे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन कोआगुलोपैथी मुजोटा कहितली आ मैटरनल डेथ APH इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज एंड सेवन के भीतर प्लासेंटल अब्रप्शन प्लासेंटा प्रीविया मे कॉज डेथ हैला मैटरनल डेथ रो भी गोटे इंपोर्टेंट कॉज हमको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाय 2030 जदी 70 तळु को आनिया को पड़िबो ताले सब कंट्रोल करिया पड़िबो नेक्स्ट स्लाइड कॉम्प्लिकेशंस प्रीटर्म लेबर हे पारे IUGR ओलिगोअमनियस भी हे पारे जदी से छोटो रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट रहिला हमें ताको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देला जेटा बहुत कम केस रे दिया गला ताले सेठी फिटल ग्रोथ टा भी कमी जिवो amniotic fluid टा भी कमी जिवो आ जदी भी डिलीवरी हैला बिकॉज़ ऑफ द ब्लीडिंग एंड बिकॉज़ ऑफ फिटल डिस्ट्रेस नियोनाटल एन्केफेलोपैथी इंसिडेंस भी अधिक आसीबो एंड फ्यूचर लाइफ रे तार मे बी सेरिब्रल पाल्सी डेवलप करि पारे न्यूबॉर्न पीरियड आफ्टर बर्थ और बिफोर डिलीवरी एंड within 7 days of delivery से छुआ मरिवार चांस बहुत अधिक है नेक्स्ट स्लाइड ये प्लासेंटा टा फुलटा पार्शियली किंबा पूरा इन द लोअर सेगमेंट रे अछि दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया लोअर सेगमेंट रे रहले असुविधा कोन होबो नेक्स्ट स्लाइड योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल okay hello am I audible yes ma'am you are audible yes audible you are very clear ma'am किछ असुविधा भलो अछि बहुत भलो को thank you madam बढ़िया चल हां प्लासेंटा प्रीविया रे oh Sasmita thank you welcome Sasmita Pratibha okay oh Pratibha welcome प्लासेंटा प्रीविया रे हमरो फुलटा लोअर सेगमेंट किंबा पार्शियली किंबा टोटली रही पारे जदी पार्शियली रहिला
ताहले भी प्रॉब्लम टोटल रहले भी प्रॉब्लम हमर ए अनुसार प्लासेंटा केते बाट अछि जत्ते पाखु रहबो अस रिस्क सेते अधिका टाइप 1 टाइप इट इज नॉट स्टेज 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया अछि टाइप सबुर पुनी एंटीरियर पोस्टीरियर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंटीरियर पोस्टीरियर अछि टाइप 4 ता हला सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया पूरा सेटा बसिथिबो इंटरनल ऑस ऊपर चारि टाइप किंतु एगुडा का एकेडमिक पर्पस पई ठीक अछि किंतु गोटे जिंस मन रखंतु प्लासेंटा रे लोएस्ट मार्जिन कोठी अछि यदि लोएस्ट मार्जिन विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ ऑस अछि सेटा हले हमर डिलीवरी शुड बी ऑलवेज बाय सिजेरियन सेक्शन यदि 2 सेंटीमीटर ऊपर को अछि ताले आमे vaginal डिलीवरी भी देई परिबा नॉट इन ऑल केसेस आमे डिस्कस करिया से विषय रे किंतु 2 सेंटीमीटर भीतर जदी अछि इवन पेशेंट आईयूडी हे जायछि इंट्रायूटेराइन डेथ हे जायछि पेशेंट बहुत छोटो अछि मालफॉर्म्ड अछि स्टिल हमकु सिजेरियन करी बाहर करिया को पड़िबो सेतिकिटा आपण जानथान जोठी आपण सिजेरियन फैसिलिटी नाही धर गोटे प्लस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट धरिके आछि 2 सेंटीमीटर विदिन 2 सेंटीमीटर ऑस आपण इमीडिएटली ताको रेफर फास्ट स्टार्ट देई इन्फॉर्म करी नेक्स्ट सेंटर को हायर सेंटर को ताको रेफर करंतु नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट प्लासेंटा प्रीविया रिस्क कोथरे अधिका रहइबो तारा जदि आरो प्रेगनेंसी रे धरती मल्टी प्रेगनेंट मल्टी यूजुअली प्लासेंटा प्रीविया इज मोर कॉमन इन मल्टी एंड एब्रप्सियो इज मोर कॉमन इन प्राइम मल्टी मानकर प्लासेंटा प्रीविया हेची से कहयो मोर आर्थर भी सेमती हेतिला मु जानि पालिनी पेनलेस ब्लीडिंग हैला तापरे कहले कोन ना फुलटा तळको थिला आउ गोटे इंपोर्टेंट कॉज प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन जेहेतु जे पाउची से सिजेरियन करूची आ इंडिकेशन पेशेंट माने भी आसी कहउचंदी हमर सिजेरियन कर दियो बर्तन सिजेरियन इंसिडेंस बहुत बढ़ी गेलानी ऑल प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन केसेस से माने बेसी प्रोन फॉर प्लासेंटा प्रीविया ऑल सिजेरियन प्रीवियस इयर्स तेनु सेटा पुनी डिपेंड करछि केतरा सिजेरियन हे जदी गोटे सिजेरियन हेची तार मे बी नेक्स्ट प्लासेंटा प्रीविया इंसिडेंस रे 2.2% कि 3% सेमती किंतु हर तीनटा सिजेरियन हे गेला 22% केस रे प्लासेंटा प्रीविया हबो तेनु जेतेटा प्रीवियस सिजेरियन हेची कि नाही हेई जदी केतरा सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन अछि दैट इज इंपोर्टेंट जदी अछि से माने मोर प्रोन फॉर प्लासेंटा प्रीविया आ बेसी गोटे खराब जिंस इमानकर जो मानकर प्रीवियस सिजेरियन केस रे प्लासेंटा प्रीविया हुए ता गोटे प्लासेंटा इनक्रीटा हुए माने प्लासेंटा आहुरी यूट्राइन मसल भितरे पस जायथिबो सेटा पसिबल असुविधा कोन प्लासेंटा सेपरेट हे परिबोनी नॉर्मली आ सेपरेटली एते ब्लीडिंग हबो जे आ बे कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग आ प्रॉपर्ली प्रिपेयर थिले भी इन सम केसेस हमकु मैटरनल डेथ फेस करिया को पड़ी पारे तेनु प्लासेंटा एक्रीटा प्रीवियस इयर्स केस प्लासेंटा प्रीविया अच्छी माने प्लासेंटा एक्रीटा थाई पारे तेन ताको भलो सेंटर रे अल्ट्रासाउंड करिया को जेमति पड़िबो आ से अनुसार जदी प्लासेंटा एक्रीटा आसीला ताले ताकू गोटे टर्शियरी केयर सेंटर को पठे कि ता मैनेजमेंट करिया को प्लासेंटा प्रीविया विथ प्लासेंटा एक्रीटा इफ इट इज डायग्नोज्ड एंटीनाटाली यदि डिलीवरी पूर्व आपण जानि चंती ऑलवेज सब बेले ताकू टर्शियरी केयर सेंटर को रेफर करिवे नहले सेगुडा को से टर्शियरी केयर सेंटर रे भी इन सम केसेस इट इज वेरी रिस्की तेनु आपण सेगुडा को जानिथिया दरकार आगुरु जदी जे कोनसरे जदी मायोमेट्रियल एंडोमेट्रियल इंजुरी हेची से माने आल्सो प्रोन लाइक प्रीवियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मल्टीपैरिटी अगेन जदी मारो एज अधिका अछि मल्टीपल प्रेगनेंसी अछि कि मारो स्मोकिंग हिस्ट्री अछि कि यूट्राइन स्कार एंडोमेट्राइटिस मैनुअल एमआरओपी हेची कि क्यूरेटेज हेची एगुडा सब केस रे भी प्लासेंटा प्रीविया रो चांस अधिका किंबा जदी लोअर सेगमेंट रे गोटे सबम्यूकस फाइब्रोइड रहला ताहले आल्सो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्लासेंटा प्रीविया एंड ऑल असिस्टेड कंसेप्शन इट इज सीन दैट सेट मानकर भी असिस्टेड कंसेप्शन माने आईवीएफ ईटी हैला कि कोन भी सेगुडा रे भी इंसिडेंस अधिका नेक्स्ट स्लाइड प्लीज क्लिनिकल फीचर्स एठी ब्लीडिंग भी हबो सेठी भी ब्लीडिंग हबो किंतु ए ब्लीडिंग से ब्लीडिंग भितर फरक कोन सेटा ही जानिया दरकार ए ब्लीडिंग ता यूजुअली पेनलेस किंतु जरा पेशेंट ब्लीडिंग हैला तापर पेन लेबर को पड़ेला लेबर पेन तो हबो सेटा अलगा कथा किंतु यूजुअली जदी एथरे ब्लीडिंग हैला एटा हला पेनलेस ब्लीडिंग आ रिकरेंट माने ताको जदी पचारिबे तोर आगुर के ब्लीडिंग हेतिला ना हो ना केमती ना 2 हफ्ता तळे टिके ना ब्लीडिंग हेतिला एथरो आ टिके अधिका हेछि ए हिस्ट्री आल्सो यू विल गेट आ गुटे पेशेंट भी कहि पारंती एटा किछि कोनोसी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जोगु होई नथिबो
पेशेंट सोइथिबो बेड रे उठला बेलू सी विल बी इन ए पूल ऑफ ब्लड मेंचे ब्लड भितर से सोइची एमती भी ब्लीडिंग हुए पेनलेस आ एटा बारंबार रिकरेंट फास्ट ब्लीडिंग ता यूजुअली कम थाए किंतु केते केस रे फास्ट ब्लीडिंग भी हेवी हे पारे आ तापर आस्ते आस्ते ब्लीडिंग ता अधिक अधिक हुए अब एब्डोमिनल फाइंडिंग रे एब्डोमिन तार कोन थिला आर कोन थिला देखंतु यार यूट्रस यूजुअली सॉफ्ट थाए तार ओटे रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट थिला टेंस थिला टेंडर थिला यार यूट्रस सॉफ्ट रिलैक्स्ड भी आ नॉन टेंडर कहीं ना तो सेमती किछ असुविधा नाही ना आ माल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन कारण प्लासेंटा तो तळे रहि गला हेडटा केमती तळगु जीवो एंगेज केमती हबो सो माल प्रेजेंटेशन इज वेरी कॉमन फीटल माल फॉर्मेशन भी कॉमन हाइड्रोकेफालस रे थिबो कि ए सब प्रॉब्लम थाई पारे थिबाटा बेसी चांस होची प्लासेंटा प्रीविया रे आ प्रेजेंटिंग पार्ट हाई ऑफ बिकॉज़ प्लेसेंटा तळे रहिला फुल्लटा तळे रहिला एंगेजमेंट केमती हबो तेनो प्रेजेंटिंग पार्ट सब अधिका थिबो माल प्रेजेंटेशन थिबो ये थिबो ब्रीच थिबो ट्रांसवर्स लाई थाई पारे सो मैटरनल पल्स बीपी सेटा के भी अफेक्ट हे पारे बट इट इज प्रोपोर्शनेट टू ब्लड लॉस किंतु ब्लड लॉस एते तो ब्लीडिंग हेची से कहूची बोधे मिछ कहूची कारण तार पल्स भी तो एका एक्चुअली एका ठीक अछि ए जिंसटा केबे भाबिबेनी कारण प्रेगनेंसी रे गोटे वॉल्यूम एक्सपांशन हुए माने हाफ ऑफ द प्लाज्मा जति की थाए तार डबल हे जाय आ आरबीसी भी बहुत बढ़े तेनु हमर जो हाइपरवोलेमिया थाए तेनु टिके ब्लीडिंग हे गले भी पेशेंट रे हठात पल्स बीपी चेंज हे जिवनी पल्स बीटा बढ़ी जिवो बीपीटा कमी जो संगे संग हबनी जेले पल्स बीपी चेंज होला बहुत ब्लीडिंग हे जाइथिबो सेटा मन रखिया दरकार तेनु तेनु ए जो मैटरनल पल्स बीपी अधिका नाही पेशेंट कहूची मोर ब्लीडिंग अछि बर्तन चाली के आछि रिलैक्स यूट्रस तेनु यार किछि एनी एटा बहाना काढुची नेवर थिंक इन दैट लाइन ब्लीडिंग पेशेंट माने भूल कहिबेनी आ ताछरा ब्लीडिंग हेले जे ब्लड बीपी कमी जिवो एटा भी नुह सो ए सब केस रे मैटरनल बीपी पल्स कम नॉर्मल थिले भी यू शुड एक्टिवली मैनेज इट टू प्रिवेंट एनी कैटास्ट्रोफ और एनी कॉम्प्लिकेशन आ भाजनल एग्जामिनेशन करिवे नाही जदी आपण प्लासेंटा प्रीविया बोली जानि चंती किंबा सस्पेक्ट भी करूचंती भाजनल एग्जामिनेशन करनु विदाउट भाजनल एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन मैनेज a diagnosis ta mainly from history and ultrasound next slide next the maternal complication मार कोन असुविधा हो मार असुविधा बहुत ब्लीडिंग हे पारे र प्लासेंटा तळको अछि बहुत बेसी री सेपरेट हे गला बहुत ब्लीडिंग हे गला पेशेंट सब को पळेला पल्स भी चली गला पल्स कमी गला बर्ड्स बहुत बढ़ी गला बीपी मिललानी दैट मे आल्सो हैपन प्लासेंटा एक्रिटा जदि प्लासेंटा प्रीविया संगे प्लासेंटा एक्रिटा अछि सेटा बहुत असुविधा माने ता ऊपर वर्तमान बहुत किछि चलछि केमति प्लासेंटा एक्रिटा रे ए कर मोस्ट ऑफ द हिस्टेरेक्टोमी जोटा करा होछि पेरिपार्टम हिस्टेरेक्टोमी मोस्टली देयर प्लासेंटा एक्रिटा कारण सेटा मां को बंचेया को हेले तुमको यूट्रस सैक्रिफाइस करिया पड़े दिस इज सच ए ग्रेव डिजीज अन्य सब केस रे हम चेष्टा करछु यूट्रस टा को सेव करिया को किंतु प्लासेंटा एक्रिटा रे मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू सेव द यूट्रस सेव द लाइफ ऑफ द मदर at the cost of uterus टा को हम काढिबा को पड़बो बहुत केस रे आ गुटे हला एनीमिया टिके बारंबार ब्लीडिंग होची पेशेंट एनीमिक हे छै आ तापर टिके ब्लीडिंग हला आलको पेशेंट विल गो टू शॉक तेनो एनीमिया टा को पेशेंट ब्लीडिंग हला आपण प्रेगनेंसी कंटिन्यू करचंती से सब केस रे आपण एनीमिया टा को करेक्ट करिया निहाती दरकार आ कोनी एठी म आउथरे कहली पोस्टपार्टम हैमरेज कैपिटल लेटर लिखाई छी काहे कि ना एटा सबटु बड़ डेंजर एथरे Antepartum hemorrhage अपन तक बंचे देबे they are more prone for postpartum hemorrhage and they are more prone for to die from postpartum hemorrhage ता माने से माने postpartum hemorrhage भी हबो आ हेले भी ताकू सेथरे मरि जबार चांस भी बहुत अधिका आ acute renal failure and death they are also very common next slide fetal complications prematurity सेथरे भी थिला एथरे भी अछि कारण प्रीमैच्योरिटी आइदर सी मे गो इनटू लेबर से लेबर को पड़े जाय पारे तार लेबर पेन हे पारे ता डिलीवरी हे जाय पारे करियो पड़ी पारे किंबा जेहेतु मेजर प्लासेंटा की ब्लीडिंग अधिका बढ़ुची तने आपण भी ता डिलीवरी करै पारंती सो प्रीमैच्योरिटी इज अ वेरी कॉमन थिंग आ जदी बेसी प्लासेंटा सेपरेट हे गला मोर देन 1/3 हे गले fetal distress हे जिवो आ हाफ पाख बके हेले ता fetal death हे जिवो इंट्रायूटेराइन डेथ हेला मा छुआटा मा पेटरे मरि गला किंबा डेलीवरी हला परे भी ए जो हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन कम हेतिला ताकू सेटा को तार ब्रेन अफेक्ट हे कि न्यूरोनटल एन्केफेलोपैथी हे पारे और सेरिब्रल पाल्सी हे पारे
Next slide. Next. भाषा प्रिविया एटा कोन एटा कहबा पूर्वरु मु गोटे मोर एक्सपीरियंस कहूची मु जतले फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन रे जॉइन कली गोटे फ्रेश आईडी हेगला फ्रेश आईडी हेला फर्स्ट यूनिट रो स्वाता मैडम आसले आसी पार्टी कोले की ए सब थिले की डिलीवरी करथिले मु तार प्लेसेंटा देखिथिली मु खाली एति कली मैडम सेटा भेलामेंटस इंसर्शन थिला आ गुड कोन वेसल फाटी जाईची तमे डका मगा हे की देखाला आ सेटा दैट इज द फर्स्ट केस ऑफ भाषा प्रिविया व्हिच आई हैव सीन एंड डायग्नोस्ड से कौन हो फिटाल वेसल गुड़ाक प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड सॉरी फिटाल वेसल्स फ्रॉम द प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड पास थ्रू amniotic membrane which overlies the internal os मु यापर आपन पिक्चरटा देखैबी से तळे मेम्ब्रेन टा रप्चर हो ता संगे से फिटल वेसल टा रप्चर हे जबो हेगिरी गोटे छोटो न्यूबॉर्न रो फिटस रो केते ब्लड थिबो 80 ml per kg हेला को 3 kg हेला को हार्डली 8 3 24 240 सेती जदी ब्लीडिंग हेगला कि आधा कने ब्लीडिंग हेला देयर विल बी इंट्राउटेराइन डेथ आ फिटल मोर्टालिटी बहुत हाई 50 to 75% किंतु बाकी जति की बंचु चति ताको ठीक प्रॉपर्ली डायग्नोज करके ही बंचा होची नहले सेगुडा भी 100% हे जिवो आ एटा मन रखिया दरकार एब्रुप्सियो प्लासेंटा प्रिविया एथि जति की ब्लीडिंग होतला सेटा माठु ब्लड टा जाउथला किंतु भाषा प्रिविया रे ब्लीडिंग इज फ्रॉम फिटल ओरिजिन नेक्स्ट स्लाइड माने ब्लीडिंग टा छुआ टू ब्लीडिंग टा होची नेक्स्ट एटी चित्रटा क्लियरली आपन दिसतबो प्लासेंटा अछि लेफ्ट साइड रे राइट साइड रे अम्बिलिकल कॉर्ड टा इंसर्ट हेची राइट साइड रे सेई टू फिटल ब्लड गुडा का amniotic membrane ऊपर ऊपर जाई आसीकरी प्लासेंटा को आछंती सो ए जो ऑस पाखरे ऑस ऊपर को जोटा अछि ऑस ऊपर को एटा ऑस ऊपर ए जो फिटल वेसल टा एठी अछि ए जगहटा एठी थरा मेम्ब्रेन रप्चर हला ता संगे फिटल वेसल टा फिटी जिवो एटा भी छिंडी गले ब्लड टा कोठु आसिला फिटस रु आसिला एंड फिटस विल बी एक्सांगुइनेटेड माने तार ब्लड गुडा सब ब्लीडिंग हे जिवो नेक्स्ट सो जनरल मैनेजमेंट जे कोन से केस एपीएच आसिला से ताउ स्टाम्प नै कि आसिनी मु प्लासेंटा प्रिविया कि मु एब्रुप्सियो आपण कोन करिवे एकुटिया ब्लीडिंग पेशेंट एपीएच पेशेंट मैनेज करिवा कष्ट तो कष्ट पेशेंट पाई जम्मा उचित न ऑलवेज शाउट फॉर हेल्प यू नीड मोर पर्सनल बेसी लोक आपन को दरकार विभिन्न काम करिवा को कि ताकू आईवी लाइन टा दे देबो कि कैथेटर दे देबो कि ताकू एग्जामिन करिवो कि ओटे हिस्ट्री नै जिवो कि ब्लड करी ब्लड ट्रांसफ्यूज क्रॉस मैचिंग डोपिंग पाई पठेबो कि अदर ब्लड टेस्ट पाई पठेबो ए पाई आपन लोक दरकार तो ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प rapidly evaluate ABC any patient serious patient emergency patient ABC is darkar that airway breathing circulation and consciousness ए चारटा निहाती दरकार तर पेशेंट में भी बहुत ब्लीडिंग है कि इरिवर्सिबल शॉक को पड़े थिबो से सब कथा भी आपण देखिबा दरकार जदी एयरवे एबीसी रे किछ प्रॉब्लम अछि इमीडिएटली ताको मैनेज करबा दरकार आउ पेशेंट शॉक रे थाउ न थाउ आपण दुईटा आईवी लाइन दे देबे दुईटा आईवी लाइन आ एपी जदी पीपीएच ट्रॉलीटा रेडी रखिया कथा सेंती एपीएच पाई भी जिंस ट्रॉली रेडी रहबा दरकार जोथरे आपनकर वेंट्रन थिबो आईवी अटैचमेंट थिबो फ्लूइड्स थिबो ब्लड सैंपल पठेया पाई वायल्स थिबो सेटा सब जोथरे थिबो सेटा सब रेडी थिबा दरकार सेटा खोजा खोजी रे शुड नॉट वेस्ट टाइम गोटे सीवियर ब्लीडिंग केस आसिला धर आपन खोजा खोजी रे टाइम नै गले ताले वी मे लूज द पेशेंट दीट आईवी लाइन wide bore 14 gauge or 16 gauge not more than that 1829 14 or 16 तापरे फ्लूइड देबे को फ्लूइड देबे हमर सबले सब जिंस हम भाबु कोन ना जोटा बेसी दामी किया सेटा भलो होइथबो निश्चय तेनो एटा कोन दबा ताकू ये दे दबा एस्टर दे दबा एटा दे दबा सेटा दे दबा कलर्ड देबा कलर्ड इज नॉट द फ्लूइड ऑफ चॉइस जे कोनसी एक्यूट हेमरेज पई आपण मन रखुंदु कलर्ड इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑलवेज फर्स्ट चॉइस इज क्रिस्टालॉइड माने आपन को रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन एवडा सब ले क्रिस्टालॉइड हला रिंग आउट ता भितरे सबटू बेस्ट फ्लूइड होची रिंगर लैक्टेट आपन गोटे फ्लूइड ब्लीडिंग हे कि पेशेंट आछि आईवी लाइन टे देबे फ्लूइड टे चले देबे जदी बेसी ब्लीडिंग हेची ताले यू कैन गिव रैपिडली गिव 1 लीटर कारण आमे जते फ्लूइड दोउचे तार 1/3 रहउची सर्कुलेशन रे बाकी 2/3
चल जाउची सो 1 लिटर दे देबाटा किछि अधिका न जति से कहूची मोर बहुत ब्लीडिंग हेछि 1 लिटर रिंगर लैक्टेट दे दे परिबे खुशी रे तापरे ब्लीडिंग जदी कंट्रोल हैला न हैला तनिके मैनेजमेंट करथिबे आ गुटे फॉलिस कैथेटर देबे फॉलिस कैथेटर द्वारा एम होची आपन ब्लीडिंग हेछि दैट मे बी प्री रेनाल फेल्योर माने आपन वॉल्यूम कमी जाई करी तार किडनी डैमेज भी हेइ थाई पारे ताको हमें केमति जाने आमे तो मातिले एपटे एंटीनेटल एंटीपार्टम हमरे सिए एपटे किडनी फेल्योर हेगी ताको ठीक से मैनेज न होगी पेशेंट में डाई तो सेटा गुटे फॉलिस कैथेटर देबा तार वॉल्यूम टा ठीक अछि बोली केन जानिबा ता यूरिनेशन टा ठीक हबो धर 30 ml पर आवर हे जाउची देन इट इज नॉर्मल माने इट इज एक्सेप्टेबल जदि यूरिन वॉल्यूम 30 ml रु कम होची माने तार फ्लूइड टा देहरे कमी जाईची देहरे फ्लूइड कमी जाईची हमको अधिका फ्लूइड दबा को पड़िबो वॉल्यूम एक्सपेंशन दरकार एंड ऑल वुमेन विथ एपीएच should remain in hospital till bleeding stops and delivered amar bahagar achi amar eta achi seta achi epote jibu sepote jibu ame kau koi ki asinu chua man ku chadi ki asu don't listen to anything all women with FPH should remain in hospital till bleeding stops even bleeding stop hela pare placenta previa re joda conservative management de western countries mane घर को पट्टी दोची किंतु आमो कंट्री रे आई थिंक सेटा ठीक न आमे तांको पूरा ये रे रखिबा डिलीवरी जाए आ जोठी आमे प्लासेंटा प्रिविया भर्ती करूचे कोठी भर्ती करिक रखिबा जोठी 24 आवर सीएस फैसिलिटी अछि धर सीवियर ब्लीडिंग टे हला इमीडिएटली नै सीएस करी पिया को बंचे दे परिबा सेठी पेशेंट एडमिट हेकी रहला दरकार नेक्स्ट स्लाइड जदी ब्लीडिंग बंद हैला तापरे कोन करबा फर्दर मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन कॉज ऑफ एपीएच धर एटा एब्रोप्सियो कि प्लासेंटा प्रिविया एब्रोप्सियो रे बहुतरा फीटल डिस्ट्रेस फीटल डेथ थाए आ सेमानकर कोआगुलोपैथी एवरा सब थाए एब्रोप्सियो रे यूजुअली टर्मिनेट करा इवन ब्लीडिंग स्टॉप हेले भी टर्मिनेट करा वेरी अनयूजुअल केस रे स्मॉल हेमाटोमा रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा अछि जो नॉट इंक्रीजिंग इन साइज एंड पेशेंट इज बेबी इज टू प्रीटर्म एंड वेरी वैल्यूएबल डायबिटीज रा कंटिन्यू करो किंतु एब्रोप्सियो रे प्राय टर्मिनेट करा जाय प्लासेंटा प्रिविया रे ब्लीडिंग बंद हे गला तारो जेस्टेशनल एज कम अछि से केस रे हमें टिके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दबा एंड एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग प्रीटर्म हेइतो धर बहुत ब्लीडिंग हैला हमें कोन रखिबा माटा को तो मारी परिबानी छुआटा काले बंचिबो न छुआ तो इंतरे मर जिवो भी सो जले एक्सटेंट जदी हेवी ब्लीडिंग हैला ब्लीडिंग ता मोर देन 600 ml हैला ताहले हमें ताको रखिबानी वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी कंट्रोल हैलानी किबे गुटे बड्डो स्पाउ येट हैला बाउट हैला इफ देयर इज fetal distress डेथ मालफॉर्मेशन सेठी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रे कररा किछि मतलब ही नाही कारण छुआ त नाही करबे कांकी किमा मेजर मालफॉर्मेशन छुआ त बंचिबोनी आ ताको रखिबे कांकी आ गुटी ता ओला जेस्टेशनल एज धर जेस्टेशनल एज होची 37 वीक्स रे टर्न हे जाईची सेठी आ ब्लीडिंग बंद हेले भी हमरो प्रोलॉन्ग करी प्रेगनेंसी किछि फायदा नाही आ जदी कम अछि ताहले हमरो सेठ रखिया जदी जेस्टेशनल एज टर्न हे गला से जो प्रकार पीएच हो जदी ब्लीडिंग कंट्रोल हो न हो ताको हम टर्मिनेट करिवार अछि नेक्स्ट स्लाइड एब्रोप्सियो प्लासेंटा रो डायग्नोसिस एडा को हमें डिस्कस करछे स्टिल फॉर रिवीजन हम जस्ट रैपिडली चल जिबा डायग्नोसिस ऑफ एब्रोप्सियो प्लासेंटा डायग्नोस्टिक पॉइंट्स कोन ब्लीडिंग डार्क ब्लड टेंस टेंडर यूट्रस माने डार्क ब्लड ब्लीडिंग ता से कहबोनी जे फ्रेश ब्लड पूरा ब्राइट रेड बोली कहबोनी सेटा ब्राइट रेड डार्क रेड अवश्य डिपेंड करे टेंस टेंडर यूट्रस टा पूरा हार्ड हेते उडी हार्ड हेतिबो आ छुइला आलु काटुथबो फीटल मूवमेंट से कहबो फीटल मूवमेंट आ नाही छुआ आ खेलुनी किंबा छुआ कमी जाईची खेलिया किंबा फीटल हार्ट पकेला आलु को 110 तळगु अछि कि 160 ऊपर को अछि किंबा फीटल हार्ट मिलुनी किंबा पेशेंट में कम इन शॉक पल्स बहुत फीबल रैपिड 3D बीपी होची 80/60 किंबा हम आउथरे कहिछि डीआईसी रे कोआगुलोपैथी हुए से सब आडू अन्य साइड रु नोज ब्लीडिंग किंबा दांतर ब्लीडिंग हे पारे कि कैथेटर दे लाडू ब्लीडिंग हे पारे ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड से कि आसी पारे नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डायग्नोसिस केमती करिवे प्लासेंटा प्रिविया रा तार सिम्पटम साइन देखंतु ब्लीडिंग ता फ्रेश ब्लड पेनलेस रिकरेंट सब केस रे फास्ट ब्लीडिंग ता रिकरेंट नहीं नथिबो रिकरेंट भी हिस्ट्री मिली पारे पेनलेस यूट्रस ता रिलैक्स थिबो अनलेस द पेशेंट गोज इनटू लेबर पेशेंट जदी लेबर को न जाईची पेशेंट डिलीवरी पेन न हेची ता यूट्रस ता पूरा सॉफ्ट आ रिलैक्स थेके थिबो आ ता संगे रे
माल प्रेजेंटेशन थी लोअर पोल में भी एम्प्टी थी लोअर पोलटा तलपटे हाथ मारला बेलू पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट लगुथो ता माने ट्रांसमस्ला हेकी थिबो किंबा हेडटा ऊपर को थिबो पूरा बहुत ऊपर को थिबो काहे ना तळे प्लासेंटा रहि जाइछि एनगेज हे पारुनी फिटल कंडीशन छुआटा आइदर नॉर्मल थिबो किंता जदी बेसी ब्लीडिंग हेछि बेसी सेपरेट हेछि ताले डिस्ट्रेस थाई पारे किंतु गोटे जिंस मन रखिबे जतले प्लासेंटा प्रीविया इज नॉट एक्सक्लूडेड इवन एब्रोप्सियो बोली भाबुचंती किंतु प्लासेंटा प्रीविया एक्सक्लूड करि नाहंती डोंट डू पीवी पर भाजनल एग्जामिनेशन करिवे नाही इन दैट केस कारण अल्ट्रासाउंड तो आजिकली सबुआडे मिललानी सबुआडे अवेलेबल मिललानी तो अवेलेबल सबुठी अछि तेनु अल्ट्रासाउंड टे करिके वी कैन डायग्नोस सो प्राय बहुत हॉस्पिटल रे अछि इजीली डायग्नोस प्लासेंटा प्रीविया आ जोठी निहाती अल्ट्रासाउंड नाही सेठी डबल सेटअप एग्जामिनेशन करिवे आपण जोठी टर्मिनेट करिया को चाहुचंती नहले पीवी जोठी स्लाइटेस्ट डाउट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया अछि सेठी पर भाजनल एग्जामिनेशन बा पीवी एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन करिवे नाही एटा जेमति ठीक रे मन रखिबे नेक्स्ट हेवी शो पेशेंट माने हेवी शो माने कोन इट इज नॉर्मल कंडीशन किंतु टिके अधिका ब्लीडिंग आछि बोली पेशेंट आसी कंप्लेन करछि आ एटा सब बेले एसोसिएटेड विथ लेबर पेन हेले तो तार सिम्पटम हो जे एटा तेनु लेबर पेन नथले शो नथिबो सो एसोसिएटेड विथ लेबर पेन इट इज ब्लड टा सब बेले म्यूकर्ड नाळ हे लागुथि नाळ हे कि मिसी के आस्थिला से कहिबो ताक पचेरि आपण से कहिबो भी आ एटा नेवर हेवी बहुत अल्प आसीबो पेशेंट जनरल कंडीशन केबे भी अफेक्टेड हबोनी बाय हेवी शो माने पल्स पीपी केबे अफेक्टेड हबोनी कि बहुत ब्लीडिंग केबे हबोनी केडा रिकरेंट भी हबोनी थरे हबो तापर भलो हिजबो टिके ब्लीडिंग हितो ठीक हिजबो तापर पेशेंट लेबर को गला एक्टिव लेबर को जिबो अपन डिलीवरी करिवे कि असुविधा हबो नेक्स्ट भाषा प्रीविया यार इंसिडेंस जदियो बहुत बेसी नुह किंतु डायग्नोसिस रे बहुत इंपोर्टेंट ओनली इफ यू कैन डायग्नोस यू कैन सेव द बेबी डायग्नोसिस एंटीनेटल डायग्नोसिस दैट इज द बेस्ट एंटीनेटल डायग्नोसिस केमती हबो जे अल्ट्रासाउंड संगे डॉपलर करबे आपण देखि परिबे जे इंसर्स कॉर्ड इंसर्शन कोठी हेची वेसल गुडा केमती जाईची अस उपरे हियर पेनलेस vaginal ब्लीडिंग जेतोले स्पॉन्टेनियसली मेम्ब्रेन रप्चर करला किंबा आपण एआरएम माने मेम्ब्रेन रप्चर करले सेतबेले जदी ब्लीडिंग ता आरंभ होईची ब्लीडिंग आरंभ सब बेले मेम्ब्रेन रप्चर संगे हबो आ फिटल ब्राडिकार्डिया संग फिटल हार्ट रेट ता कमी जिवो कारण ए ब्लड ता कोठो आछि fetus ring आछि fetal shock or death can occur rapidly at the time of diagnosis due to blood loss constitute a major bulk of the blood volume एटा 3 kg रे त मकल 240 खंड हबो बेसी 300 भी हबनी ml हबनी तेनु संगे संग fetal shock fetal death immediately हे जिवो तेनु आपन को डायग्नोसिस मैनेजमेंट सेते रैपिडली करिया पड़ो आ जदी आपन डायग्नोज करले डोंट वेट फॉर vaginal delivery induction नॉट रैपिडली immediately take for emergency cesarean section and save the baby by an expert neonatologist. Hello? हाँ, कौन थे मैडम? Hello? Sorry. How? Definitive diagnosis by inspecting the placenta and fetal membrane after delivery. Delivery पर ही अपन सेटा देखिए. Next slide. ये नुआ सब जो जॉइन करछन अनम्यूट हेलन तो सिस्टम प्रॉब्लम करछन हेलो मीना मैडम कंटिन्यू हां मैडम am I audible? टिके रो हां ठीक है मैडम ये सुमन कुमार के शुभकांता सुमन कुमार को म्यूट कर दियो शुभकांता कौन है तुम्हें कटी गला मैम एक्चुअली नेटवर्क इशू हेलो am I audible? Yes ma'am you are all audible please continue please continue please continue management of abruptio placentae या पूर्वरु you are muted
Kirti, unmute yourself. Am I audible? Now, Hello? now you're audible. Yes, yes. Clotting status देखिए by bedside clotting test जदि abruptio placenta अछि काहे ना coagulopathy एथरे बहुत कॉमन एटा very easy एथि पे बड़ बड़ laboratory दरकार नाही clot observation test कर परिबे द 10 ml blood नै जिवे नै कि ताको इरेक्ट कर रखि देबे ठीक 7 मिनिट पर देखिबे 7 मिनिट रे देखिबे गोटे सॉफ्ट क्लॉट गोटे क्लॉट फॉर्म हिची कि नाही फार्म क्लॉट जदि क्लॉट फॉर्म हेनी किंबा सॉफ्ट क्लॉट फॉर्म हेची जोटा कि संग संग भांगी जाउची दैट मींस ब्लड रे कोआगुलेशन abnormality अछि तेणु ए केस को आपण फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एबा सब दिया है कि ताको ठीक करा हला तेणु bedside clotting test clot observation test you should do in every case of placenta abruptio placenta कारण एमानकर कोआगुलोपैथी बहुत कॉमन ट्रांसफ्यूजन as necessary जदि बहुत ब्लीडिंग हे जायछि आपण ट्रांसफ्यूज करिवे ट्रांसफ्यूज कला बेले होल ब्लड दे परिवे किंबा बेटर होछि पीआरबीसी देबे पैक्ड आरबीसी देबे ता संगे रे एफएफपी देबे जेति फास्ट किछ दिन 2-3टा खंडा आपण देई परिवे खाली पैक्ड आरबीसी किंतु यदि मैसिव हेमरेज पे आपण बेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करचंती पैक्ड आरबीसी संगे रे एफएफपी भी देबे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 1:1 प्रोपोर्शन जदि ब्लीडिंग बहुत अधिका अछि ताले जते जल्दी डिलीवरी हबो ब्लीडिंग ता कमी जिवो धरो ऑस्टा ओपन अछि आपण एआरएम कर देबे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ता को रप्चर करिकि ऑक्सीटोसिन देले सेटा कोन करे फ्लूइड उडा पळे आसीबो आ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करले प्रेजेंटिंग पार्ट कंप्रेस करिवो प्लासेंटा को कंप्रेस करिवो ओवर यूट्राइन वॉल सो फर्दर ब्लीडिंग हबो नाही आ किंबा थ्रोम्बोप्लास्टिन जिवो नाही मैटरनल सर्कुलेशन सो एआरएम ऑक्सीटोसिन क्ला लेबर विल प्रोग्रेस करिवो vaginal डिलीवरी जोठी सर्विस ता फुली डायलेटेड संगे संग वैक्यूम देके आपण डिलीवरी कर पारिबे जदि डिलीवरी ता इमिनेंट संगे संग होउनी किंतु हेवी ब्लीडिंग अछि किंबा इमिडिएटली ताको ये करिया दरकार रे आपण सीएस कर पारिबे किंबा जदि फीटल डिस्ट्रेस हला ताले धर फीटल आट बहुत कमिला बडला आपण जदि एआरएम करिवे ऑक्सीटोसिन देबे त तो फीटल डेथ हेजबो डिलीवरी बेल सो यू हैव टू गो फॉर सिजरन सेक्शन यदि कोआगुलेशन एब्नॉर्मलिटी अछि आपण वेट करिवेनी कारण vaginal डिलीवरी विल टेक टाइम आ जत्ते टाइम अधिका हबो ए एब्नॉर्मलिटी सेते बढ़ी जिवो तेनु सेठी आल्सो सिजरन सेक्शन इंडिकेटेड हां एठी गोटे कथा कोआगुलेशन एब्नॉर्मलिटी पई आपण जले सिजरन सेक्शन करिवे आगो हेमोडायनामिकली को स्टेबल करिवे केमती करिवे ताको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मिनिमम 4टा देबे देकी अन्य जिंस देकी करा हबो जदि आपनकर से सब फैसिलिटी सेठी नाही ताले होची इमिडिएटली आपनकर फ्लूइड देकी ए करिके इमिडिएट पाखो को फोन करिके ताको ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्ली दे करी पर जोटी सीएस फैसिलिटी थिबो एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी थिबो यदि कोआगुलेशन एब्नॉर्मलिटी अछि इमिडिएटली डिलीवरी कला परे ही मदर इंप्रूव करिवो आ डिलीवरी पूर्व आपन ताको कोआगुलेशन एब्नॉर्मलिटी को आपन ब्लड प्रोडक्ट देकी ताको ब्लड कंपोनेंट देकी तो ठीक ठाक करियो in every case of abruptio placenta be prepared for postpartum hemorrhage दम बारंबार कहूची थ्रबी आउथरे रिपीट कर कहूची postpartum hemorrhage हमारा चांस बहुत अधिका तेनु से सब कैसे पूरा पीपीएच ट्रली एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर पीपीएच पूरा थिबो लेबर रूम जेमती दैट प्रीशियस लाइफ कैन बी सेव्ड लाइफ टा को सेव कर नेक्स्ट स्लाइड प्लासेंटा प्रीविया केमती कंफर्म करिवे धर ब्लीडिंग ता हल्ला आपण भाबुचंदी प्लासेंटा ब्लीडिंग बंद हेची आपण त प्लासेंटा प्रीविया भाबी करी देइचंती किम जानिबे से प्लासेंटा प्रीविया अछि प्लासेंटा अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट मेथड जदी प्लासेंटा प्रीविया अछि 37 वीक्स हे जाइची माने टर्म हे जाइची से सब केस रे आपण डिलीवरी टा प्लान करबे को मेथड रे डिपेंड्स जदी within 2 cm अछि नो डाउट ताको सिजरन करिवे किंबा 2 cm ऊपर को जदी अछि अन्य किछि इंडिकेशन अछि ताहले आल्सो सिजरन करिवे आ इन सम केसेस यू मे अलाउ फॉर vaginal delivery जदी डायग्नोसिस ता अनसर्टेन अछि प्लासेंटा प्रीविया कि नै आपण जानि पारु ना आपण एक्सपेक्टेंटली 34-7 वीक्स चाहे देबे कारण ता पूर्व हम इंटरवेन करिवेनी 37 वीक्स रे डबल सेट ऑफ एग्जामिनेशन करिवे किंतु ए जिंसटा जोटा हमें मूलरू पढ़िथिलु किंतु वर्तमान एटा जेतु अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी बहुत जगह रे अछि ए जिंसटा ते दरकार पड़िबो नाही नियाते दरकार पड़ले यू कैन गो फॉर डबल सेटअप माने पूरा सब रेडी करबे सिजरन पई
पेशेंट सोइबो ताको पीवी करिवे जेंटल पीवी करिवे आगो फर्निसेस देखिवे तापर असोपन अछि देखिवे तापर आस्ते आस्ते भितर पुरे यू कैन फील द प्लासेंटा आ जदि प्लासेंटा नाही देन यू डू एआरएम एंड ऑगमेंट नेक्स्ट ए पीवी करबा न करबा पर मु मोर गोटे एक्सपीरियंस शेयर करिया को चाहूची मु नुआ लेक्चरर ही जॉइन करथली बुरला रे गोटे पूरा 7टा बेलू गोटे पेशेंट आसला पेशेंट आसी कहला कि होची मोर बहुत ब्लीडिंग अछि पेशेंट चल चली आछी किछि दिसुनी पेल दिसुनी किछि नै तापरे देखला बेलू सब सफासफी कोन करछि कुआडे किछि नै पूरा क्लीन अछि पिलान कहले मैडम ए बाहाना करछि फेर फुले पेशेंट मु ताको मोर इमरजेंसी 8टा बेले सरीवार थिला मु देखि देई कि जाय कोन लेबर थिबो कि कोन पेन होछि ना नै तापरे मु काई कि भामे ताको विश्वास करनी बोली मोर पीवी कला बेलू कोनटा अस भितर वन फिंगर थाए कोनटा अस भितर बोली आंगुठीटा पुरेछि तापरे एते जोर ब्लीडिंग हैला मु आंगुठा नै आसली पिलां कहली इमिडिएटली ताको ओटी को शिफ्ट कर मु संग संग आछि बाय द टाइम मु जाई कि आसला बेलू पेशेंट जाई ओटी को देयर इज आईओटी तार हमर फ्रेश स्टिल बात तेनु प्रत्येक 16 रु गोटे पीवी इन प्लासेंटा प्रीविया मे बी वेरी सिवियर टू किल द पेशेंट किल द fetus or produce some shock and other things तेनु पीवी करिया पूर्व आपण 100% सियोर होबा दरकार जे देयर इज नो प्लासेंटा प्रीविया नो पीवी टा करिवे नै सेटा बडर रिलेशन आमे ताको जोटा को कहूछु आम मिस्टेक टा को आमे एक्सपीरियंस कहूछु एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस मिस्टेक न कली फिट एक्सपीरियंस कहली ओके सो प्लासेंटा प्रीविया रे केमती करिवे डोंट परफॉर्म vaginal examination आज पेशेंट के पेन कोची लेबर अछि ना पीवी कर दो ना करिवे नै ई ब्लीडिंग इज हेवी एंड कंटीन्यूअस डेलीवर बाय सिजरियन सेक्शन टिके 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 ही होउची कि बेसी होउची काळे के ताल ताको छाड़ीबे नै 37 वीक्स जाय कारण इट इज नॉट बेनिफिशियल टू द मदर और द fetus मां पई छुआ पई का पई भी ठीक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट केतोळे देखिबे तोळे ब्लीडिंग टा स्टॉप हो गेला किबा बहुत लाइट अछि छुआटा बंची छी भलो कंडीशन रे अछि एंड तार माल फॉर्मेशन नाही किछि नाही आ 30 टर्म ही माने 37 वीक्स इन दैट केस यू admit her for expectant management and ताकू जेतेबेले दरकार पड़ो 24 आवर सीएस फैसिलिटी जो जाकर थी सेठी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करला नेक्स्ट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट केमती करिवे हॉस्पिटल रे तो रखिबे एनीमिया टा को करेक्ट करिवे एनीमिया फेरस सल्फेट तो देबे किंतु एनीमिया जदी ब्लीडिंग बेसी हेची फेरस सल्फेट रे एनीमिया पूरा करेक्ट होबनी से केस रे आपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देबा पड़िबो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देइकिरी तार ब्लड टा हीमोग्लोबिन टा को बढ़िया पड़िबो जदी से कम अछि हीमोग्लोबिन टा आपन को एटलीस्ट 10 ऊपर को नबा पड़िबो हीमोग्लोबिन आउ सांग हाथ रे क्रॉस मैच ब्लड भी रखिबे कारण एट एनी मोमेंट सी मे नीड सिजरियन सेक्शन जो टाइम रे भी हठात तार ब्लीडिंग हैला ताको सिजरियन आपन करिया पड़ला से ब्लीडिंग अधिका हे पारे आपन ब्लड तेन ब्लड भी हाथ रे रखिबे आ जदी प्रीटर्म अछि ताको आपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देबे कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइड देथिले सेटा लंग मैच्योरिटी करथि आपन जो टाइम रे भी इंटरवेन कले बिफोर टर्म भी सैटिस्फाइड होई सवा पूर्व छुआर सर्वाइवल चांसेस छुआ बंचिवा चांसेस ता अधिक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम 12 घंटा रे थरे लेखा 4टा डोज देबे बीटामेथासोन 12 मिलीग्राम 24 आवर्स तो रिपीट करिवे आ ए दीटा सरीबार 24 घंटा परे दैट द बेस्ट इफेक्ट छुआर लंग मैच्योरिटी हेते बोली आशा करा जाय यदि बेबी मां अछि आरएच नेगेटिव ताको एंटी डी देबे दी एपीएच हेची नॉट ओनली प्लासेंटा प्रीविया जे कोन से एपीएच रे ताको एंटी डी दिया फुल कोर्स इफ ब्लीडिंग रिकर्स जदि से आग्रु नै थाउ 28 वीक्स रे नै थाउ भी ताको आउथरे दिया यदि ब्लीडिंग आउथरे हैला बेनिफिट रिस्क फिटस मदर देखिबे केते ब्लीडिंग हेची केते जेस्टेशनल एज अछि जरा ब्लीडिंग ते हैला मॉडरेट ब्लीडिंग हैला पेशेंट इज 35 वीक्स ताको छाड़ीबे ताको डिलीवरी करिवे सिजरियन vaginal देखि एगुडा सब मैनेज करि माने एगुडा को सब इंडिविजुअलाइज्ड एटा केस रे इंडिविजुअलाइज्ड ना 37 वीक्स से ब्लीडिंग हेवी हेनी 600 ml रु कम अछि मु ताको रखि सेमति कोनस रे जिदी नै एवरीथिंग सब केस इंडिविजुअल बेसिस रे देखिबे आ सेमान को एनीमिया टा को करेक्ट करिवे हाथ रे ब्लड रखिबे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का बहुत इंपोर्टेंट एंड डोंट डू पीवी नेक्स्ट मोड ऑफ डिलीवरी सिजरियन सेक्शन केतोळे करिवे हम जो सिवियर जो टाइप रो प्लासेंटा प्रीविया हेता फिटस टा
37 weeks हो जाइछि और fetus मरी जाइछि and placenta is within 2 cm of the os. Model किंबा malform थिले भी जदि 2 cm भितर अछि, don't allow vaginal delivery. Always cesarean section. Vaginal delivery may be possible in low placental implantation. जोटी टिके ऊपर को अछि 2 cm may be possible, किंतु बहुत गुडे सेकुडा केस भी cesarean होंती. Placenta previa main mode of delivery is cesarean section. Women with placenta previa are at high risk for postpartum hemorrhage and placenta accreta increta. ए जिंसटा मन रखिथिबे. तने एगुडा को सबले एक्सक्लूड करिवे. आ जोटी cesarean हबो, जो surgeon should be a senior surgeon who can know, जो मजे कि जानिथिबो जे accreta increta को how to manage and how to do peripartum hysterectomy. Next slide. Vasa previa. Vasa previa रो main management mode होची urgent delivery. Diagnosis is most important in Vasa previa. Once you diagnosed, you can save the baby. You may save the baby, but you can't. If you can't diagnose, you are going to 100% lose the baby. Now, जदि Vasa previa रे cesarean होची, गोटे neonatal resuscitation पाई टिके better person and पूरा full preparedness is required because we are expecting, आमे expect करचु गोटे hypoxic baby. जहाँ भी ले bleeding तो हेची ना, जिते जल्दी अपन कॉले भी. Blood transfusion छुआटा को blood transfusion post op भी दरकार पड़े. Next. So to summarize, vaginal bleeding lateral meandry and हे पारे lateral pregnancy और labor रे भी हे पारे, सेटा catastrophic भी हे पारे, मां पाई छुआ पाई. Most important thing to आमे antepartum hemorrhage 100% case रे prevent करि परिबा नाही. By reducing previous cesarean section, we can reduce some amount of placenta previa, but not totally. So we prevent kar paribani. We have to be prepared to manage it. So management fine. So important is evaluation. Evaluation should be very rapid because it is an emergency. The emergency evaluation should be बहुत rapid. संगे संग सब किछि करिया पड़िबो. आपन ट्रॉली सब किछि रेडी थिबा दरकार. Resuscitation should be very prompt if the patient is in shock. Even the patient is in not shock. Shock रे नथिले भी आपण IV line सब देबे. Important abruption और placenta previa ए डाटा को differentiate करिया दरकार. Clinically बहुत केस, most of the cases can be clinically differentiated. माने आपण तारो symptom तारो examination finding रे आपण abruptio placenta previa भी separate कर पाइबे. कारण difference in mode of childbirth, difference in management, दीटा रे पूरा different. तो आपण एति कहि पारले ही can आ सब कथा. Another thing not written but always be prepared for PPH and prevent it. Next slide. Next. Any doubt or any program? Thank you, Kirti. We'll keep the questions to the last. Thank you very much for a very clear, बहुत सुंदर भारे स्पष्ट Thank you madam for your kind words. अच्छी किछि प्रश्न हमर सीनियर कंसल्टेंट्स भी सब अछथि, लुसी मैडम इत्यादि, सस्मिता मैडम सने परे इंटरेक्ट करिवे. मु बर्तन आदित्य सर को कहूची. डॉक्टर आदित्य, kindly introduce Ashutosh and let him start the topic. Yes madam, thank you very much. एबे हमर डॉक्टर आशुतोष महापात्र सर ऑलरेडी डीएफडब्ल्यू सर तांकर इंट्रोडक्शन देई सारिचंती. आशुतोष महापात्र हमर एनएनएफ रो एक्स सेक्रेटरी एवं हमर नेशनल नियोकन ऑर्गेनाइज करथिले ओडिसा रे, एवं इज very intelligent and also very dedicated pediatrician and also interested in neonatology. So मु तांको रिक्वेस्ट करिवि से कहिबे. ता पूर्वर मु टिके पार्टिसिपेंट मानकु कहि दोची टिके गुड अटायर रे रहंतु एवं निज जदी सोइबार इच्छा अछि ताले वीडियो सोइकरी सुनंतु, बट वीडियोटा बंद कर दियंतु सो दैट हमें अन्य माने डिस्टर्ब हेबेनी. एबे आशुतोष भाई आपण आरंभ करंतु. थैंक यू आदित्य. So Yes, we can start, Ashutosh. yeah, I'm starting. रे कहिबे, ओडिया रे कहिबे, बुझेबे हम पिला मन. हां ओडिया रे कहि. आशुतोष ओडिया रे कहबारे दक्ष.
Jama. କହିଦେବି ମୁଁ ଟିକେ ଲଗଇନ୍ କରୁଛି share slide share I mean, the slide share कौन असुविधा ହେଇଗଲା? ଏଇଠି ତ ନାହିଁ तो स्लाइड ଦେଇଥିଲେ କି ଆମ यूनिसेफ को शेयर करथिले ना नहीं ग्लिच हुए बोली एक्चुअली स्लाइड କରିଛନ୍ତି पोस्ट तरफ रो स्लाइड शेयर करथिले टिके सेफ मैडम ता भितरे किछि क्वेश्चन नहीं छी बाकी आशुतोष भाई कर सेट हला भितरे हां जदि किछि कृतिरेखा मैडम को क्वेश्चंस थी हां मोर ओटे क्वेश्चन अछि जे कीर्ति मैडम हमें ହେଇଗଲାଣି अच्छा मैडम ହେଇଗଲାଣି आसी गलानी सारंकर हां हां यस आशुतोष भाई आपन स्लाइड विजिबल अछि आपन आरंभ करंतु अनम्यूट करंतु स्लाइड विजिबल आपन निजे अनम्यूट होंतु करछ गुड मिनिट हला अनम्यूट करियो अनम्यूट हिच हला हां हला आपन ऑडिबल अछंती कोहंतु अच्छा ओके गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी शुभ संध्या समस्त को आज टॉपिक थैंक यू वेरी मच फॉर एनएचएम पीपल डॉक्टर आदित्य and Dr. Meena UNICEF people to give me this opportunity to talk regarding developmental supportive care in KMC. So this is almost a new topic. So I'm coming detail to the subject. म्यूट हो गले अनम्यूट करो हेलो ठीक अछि हां अनम्यूट अछि हां हला स्लाइड चेंज होउची तो स्लाइड चेंज होउची कोन करंतु हां स्लाइड किंतु आधा देखा जाउची स्लाइड का एपिसोड होउनी इट्स नॉट कमिंग फुल्ली स्लाइड देखा जाउची इंट्रोडक्शन लिखा है नहीं आधा देखा जाउची now it has come now okay then what is the introduction the introduction part. So prematurity and low birth weight, we know both of them are the leading cause of mortality death worldwide. खाली हम देश में नहीं पृथ्वी जाकर हमर prematurity और low birth weight which maximum death globally it accounts for 15.5% of all births, but in India, like India, all developing countries, we are having 30 to 40% births are low birth weight. We know the cause, maternal nutrition, many factors are there. In repeated infection, blood loss, malaria, and other causes and malnutrition. So these are the early marriage. So these are the common causes for prematurity and low birth weight, though it is very, very common in India, like developing countries. What are the direct complications of prematurity and low birth weight? We all know anemia, hyperbilirubinemia, brain damage, feeding difficulties, breathing difficulties, retinopathy, intracranial hemorrhage. So these are all common complications we usually face with preterm babies and LBW babies. Though at the adventure of making SNCUs all over India, we are now able to survive them. But the survivors, they are unable to realize their full developmental potential. That is the main aim. They have a spectrum of structural brain abnormalities. So these preterm babies and low birth weight babies, they are usually associated with autism spectrum disorder, learning disabilities, behavioral difficulties, ADHD, attention deficit hyperkinetic disorder, emotional disturbances. So these are very, very common conditions associated with the children who are surviving after preterm or low birth weight.
1 minute. Why my slide is not moving actually? Why it's not moving? Oh, lock is आशुबा okay. Oh, I'll see you from here. स्लाइड बाहर क्लिक करंतु तापरे करंतु स्लाइड एरिया Okay, 1 minute. and then click and press down. कर दो आगे ठीक कर दो नले हेडा प्रॉब्लम होछ ए जो म्यूट एटा एठी आस्तला काई आसु सेटा दरकार नै से एठी आछी सीट होय आछी ठीक हां ए दिटा तळ हां तळ दिला आसु नतला ना अच्छा अच्छा अपन स्लाइड ता मेल कर देबे कि इमीडिएटली ये को रुद्र को कि काउ जति अथवा एड्रेस ईमेल आईडी यूनिसेफ को दे देले सो माने तांको तरफ शेयर कर दियंती भलो हो हां now coming to the global sustainable development goal article 3.2 point that aims at reducing neonatal mortality by 12 per 1000 live births but and even less in the developed countries by 2030 ଟିକେ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ हां धीरे धीरे so simply ଓଡିଆରେ ଟିକେ କହିବେ हां it is simply not assure to survival of newborn babies so एटा हमरो सफिशिएंट नो जे खाली हम जदी प्रीटर्म एंड न्यू बर्थ लो बर्थ रेट बेबी को बंचै दबा एटा हम पई सफिशिएंट होउनी ताला सफिशिएंट कोन होउची ना assurance of quality life quality must be paramount importance for professionals working in newborn intensive care unit so what is happening हमर कोन होउची तांको गोटे क्वालिटी लाइफ दबा दरकार जो माने जो प्रीटर्म को बा लो बर्थ रेट बेबी को हम बंचै दोचे बाय एसएनसीयू से माने जेमती भलो नागरिक हेबे देशर उन्नति करिवे ताहले जाय कि हमको लाभ अछि हम जदी गुडे मेंटल रिटार्डेड प्रोड्यूस करिवा सब लो बर्थ रेट प्रीटर्म को हम बंचै देगिरी ताहले कोन हबो सोसाइटी रे हमर तो 30% डिलीवरीज आर लो बर्थ रेट प्रीमैच्योर तो 30% लोक हमर पागल भलिया बुलिबे without development mental development proper hobani learning proper hobani so we will land up in a very bad society am society रे कोन होबे mental retarded लोक भर्ती हिजिबे so हमकु कोन करिया पड़ो simultaneously हमकु पिलां को बचेबा सहित तांकर क्वालिटी ऑफ लाइफ केमिति भलो हबो से विषय रे हमकु नजर दबा पड़िबो that is called as developmentally supportive care achieving this goal requires provision of high quality developmental supportive care in NICU as well as in the community so हमकु कोन करिया पड़िबो हमकु हॉस्पिटल रे निकु रे एसेंशियल रे जो केयर नउचे से केयर सहित हमकु डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर दबा पड़िबो प्लस ताकू कम्युनिटी रे से घर को गला परे ता मा ताकू केमिति पालिबो कम्युनिटी रे से केमिति चलिबो ता मेंटल डेवलपमेंट केमिति होबो से स्कूल केमिति जिवो तार एजुकेशन क्वालिफिकेशन केमिति से पाइबो त एही विषय रे हमकु चिंता करिया को पड़िबो so coming to the definition care of an infant to support positive growth and development while allowing stabilization of physiologic and behavioral functioning तन कोन होचे आमे जे तो बंचेबा पय पिलाट को एडमिट कर दोचे एसेंशियल रे से सिना बंची जाउची बंची गला परे ता सहित आमे सही एसेंशियल रे ताकू पॉजिटिव ग्रोथ पय कोन कोन डेवलपमेंटल केयर दबा सो दैट तार मेंटल डेवलपमेंट तार फ्यूचर किछि प्रॉब्लम होबन तार फ्यूचर किछि जंदे प्रॉब्लम होबन गोटे जते प्रॉब्लम किछि होबनी सेटा आमे चिंता करिबा so providing support to the developmental needs of a baby in the neonatal unit within the framework of medical treatment and nursing care so kon amaro core principle of developmental supportive care stimulation of early developing sense like tactile olfactory gustatory mu e bisare detail I will go on later on and protecting the later developing senses like auditory and visual एटा को हमें प्रोटेक्ट करिबा सेटा को हमें स्टिमुलेट करिबा सो वी विल गो बाय फेज वन बाय वन नाउ कमिंग टू द मदर्स वूम मार यूटेरस भितरे जतळे पिला थिला केमिति थिला चिंता करंतु टिके कंफर्टेबल एक्वाटिक एनवायरनमेंट गोटा पानी भितरे एमनियोटिक फ्लूइड भितरे बुडी थिला पिला स्टेबल टेम्परेचर एपट सपोर्ट होतला हमर जेंते आज शीत हेला 17 डिग्री हेला काली 2 दिन पर पुनी गरम हो 24 डिग्री जीवो सेटा हबनी मा पेट भितरे टेम्परेचर मेंटेन ही रहला वार्मथ एंड कुशनिंग बाय एमनियोटिक फ्लूइड पिला एपट सेपट माड हेलानी मूवमेंट हेलानी बेसी मूवमेंट जहा हला पानी भितर रहला तनु कंफर्टेबल एटमॉस्फियर रहला इंजुरी हेलानी कुटी किछि
वार्मथ भी पाइला उषुम पिला को हला जीरो इनसेंसिबल वाटर लॉस बाहर को आसिले से हमर वाटर लॉस हो जाउची जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस न्यूबॉर्न कर हुए प्रीमैच्योर कर बेसी हुए स्किन पतला लगी सेटा भी हबो नाही बिकॉज पिलाटा पानी भितर अछि amniotic fluid भितर अछि protected from light almost uterus is almost dark so child is almost in a dark environment so आखि protection पाइला protected from sound भी ताकू सुबुनी केते साउंड सुबुची केवल ऑडिटरी रिदम किछटा सुनी परिबो से आ वाइब्रेटरी फीलिंग जोटा वाइब्रेशन हुए थरिला भलिया से मदर रूम्स रे से जो वाइब्रेशन आ किछटा साउंड से रिसीव करिवो फ्रॉम मदर इक्मो टाइप ऑक्सीजनेशन लाइक ऑक्सीजनेशन तो ऑक्सीजनेशन भी पिला को प्रॉपर होउची ऑप्टिमल एक्सक्रीशन ऑफ वेट प्रोडक्ट आइसोलेशन एसेप्सिस सेटा कॉमन पिला बाहर को आसला माने संगे संगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घेरी जिवे पिला को बट इन द मदर्स रूम child is the baby is the fetus is isolated so asepsis is maintained then parental nutrition blood paila through placenta so these are the aquatic environment you see how is the comfortable is the environment inside the mother's womb so in contrast when the child is coming to the NICU essential what happens you see what we are doing ना preterm babies with immature organ system कौन तार immature अच्छी ना deprivation और over stimulation inappropriate pattern of stimulation कौन होउची ना immature हमरो hearing और vision सुनिबाटा और देखिबाटा हमरो over stimulate हमें करूचे जोटा कि पूरा डेवलप हेई पूरा जोटा डेवलप हेची tactile and vestibular pathway ताकू कोन करचे हमें under stimulate करूचे so ताको आउ टिके ओवर स्टिमुलेट करिया पड़ो सो व्हाट इज हैपनिंग दैट इज टाइप ऑफ रोबोटिक केयर कोन आमे मशीन को गोटे जिंस फीड कर देचे ताकू से जहा कहले से कला ताठो अधिक से किछ करि परिबो ता निजर बुद्धि नै ताको हम जति फीड करछ कंप्यूटर को हम जति फीड करछ कंप्यूटर सेति रिजल्ट दूछ तनो आम ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नो पैरेंटल मैटरनल इन्वॉल्वमेंट निकुरे वर्तमान एबे न्यू मेथड रे एबे सेदिन डॉक्टर हरीश चिलानी कहउथिले सफदरजंग हॉस्पिटल रे WHO आ यूनिसेफ रो मिसिगी से माने गोटे करूचंती जे मदर सहित बेबी सहित मदर रहउची नाउ दे हैव स्टार्टेड दैट ऑब्स्टेट्रिक वार्ड विथ मदर केएमसी मदर करूची फादर भी केएमसी करूची विथ डॉक्टर जाउचन देखुचंती सो पिलर ट्रीटमेंट ऑन केएमसी आल्सो इट इज हैपनिंग ताले कौन है डीएससी रो की कंपोनेंट कौन डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर रो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रमोट्स ग्रोथ इन द प्रीटर्म बेबीज कोर प्रिंसिपल है स्टिमुलेशन ऑफ अर्ली डेवलपिंग सेंसेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड प्रोटेक्टिंग द लैटर डेवलपिंग सेंस ऑडिटरी एंड विजुअल सो व्हाट आर द कंडीशंस कौन हमें करूचे तादरे ना प्रोटेक्टेड स्लीप ता प्रोटेक्शन करूचे पिलार स्लीप जंते पिला अधिक समय सोइबो क्रिएटिंग ए हीलिंग एनवायरनमेंट कौन कहबी पर पद्धति बुझी फैमिली सेंटर्ड केयर फैमिली को इन्वॉल्व कराउची बापा मां को इन्वॉल्व कराउची तम पिलार भलो मंद तेणु कौन हम ना फैमिली बुझिले जे व्हाट इज द नीड ऑफ आवर बेबी अंधविश्वास जति थिबो तांको मुंडे रे सेटा धीरे धीरे लोप हो जिवो आपण जदि फैमिली को इन्वॉल्व करिवे जदि मदर को इन्वॉल्व करिवे मदर मुंडे रे जो जिंस सब थाए पाटी पोछि दबु महु दे देबु कजळ लगै देबु ऑल आर ब्लाइंड बिलीफ्स सेगुडा धीरे धीरे दूर हो जिवो डेवलपमेंटली सपोर्टिव एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग तेणु डेली लिविंग टा जो पिलार लाइक डायपर चेंज करवा पिला क्षीर खोइबा ए सबुटा डेली लिविंग सपोर्टिव एक्टिविटीज एगुडा को हम केमिति मैनेज करबा पेन मैनेजमेंट केमिति करबा सो कंगारू मदर केयर इज द ओनली फैक्टर द ओनली फॉर्म ऑफ केयर जहा भितरे सब डीएससी इनकॉर्पोरेट हेकी रहिछि मिसिकी रहिछि त हम जदि केएमसी करबा ताले केएमसी भितरे सब जाक डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर हमें करि पारिबा कमिंग टू द नियोनेटल ब्रेन अच्छा आपण माने कहि परिबे हम मनुष्य हिसाब रे एते गछंती कुकुर गाई छेली मेंढा बाघ भालू सब अछंती पृथ्वी रे व्हाई मनुष्य इज मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल काहेकि बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन ओनली ब्रेन हम ब्रेन लागि हम होछ सबटु डेवलप्ड एनिमल सो व्हाट इज आवर ब्रेन एते कॉम्प्लिकेटेड जिंस वर्तमान जाय आहुरी टोटली स्टडी करायनी किछि जिंस बट स्टिल देन इट इज गोइंग ऑन अंडर रिसर्च हम देखुचे this you see there is a brain development रा मोटा डायग्राम देछि so what is happening brain develops in the mother's womb actually third intrauterine life रे already
brain develop he gelani. So child has got, this is the sensory pathway. So see, vision and hearing already pila jitole delivery hela birth beku already develop he chalichi aram he jaichi. Hearing setol ku develop he gelani, language he gelani develop tike, kintu amro executive function juta seta tike late division develop हुए, that reaches its peak around 3 to 5 years. Higher cognitive function, or that is called as executive function, जोटा गोटे analysis करियर power, गोटे भाबिबार power, गोटे creativity, आप गोटे रचना लिखिले, गोटे कविता लिखिले, गोटे चित्र गोटे कले मंडूर आंकी गिरी. So this is called higher executive function. से गुटा का टिके लेट डेवलप हुए, किंतु देखो मदर सुंगुर बहुत जिनस हमरो डेवलप हो जाउछ ऑलरेडी. तेणु कौन कौन डेवलप हुए, प्रथम टैक्टाइल एंड वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलप हुए सीक्वेंस अनुसार, तापर ऑल्फैक्टरी आउ गस्टेटरी हुए, तापर ऑडिटरी हुए, लास्ट को विजुअल डेवलपमेंट हुए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ब्रेन. ब्रेन होचे हमर केमति मूल जिनिस, ब्रेन नु सब जिनिस हमें पाउचे. यू सी प्रीनेटल पीरियड जतले पिला जन्म हेनी ऑलरेडी माँ पेटर अच्छी, जिते एम्ब्रियो तैयारी है से बेसिक नेटवर्क होची हमर जीन. जीन ने कौन अच्छी ना डीएनए अच्छी. सो डीएनए जीन मिसिकी दिस बार्थ बेलू आमर एपिजेनेटिक फॉर्मुलेशन हुए. एपिजेनेटिक फॉर्मुलेशन ताहला परे आमर पोस्टनाटल लाइफ को जतबेले पिला आसी जीवो आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, सेतबेले चाइल्ड बेबी इज इमीडिएटली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हला मात्रे पिलार तार बहुत गुड़ा फैक्टर से काम कर. सो एनवायरनमेंट कौन मदर होची द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर प्राइमेट्स. जतक आमर प्राइमेट्स आम अच्छे आम होची सबुठु बेस्ट एनवायरनमेंट इज मदर. तेणु मार टच, मार कथा, मार फेस वैल्यू, स्माइलिंग फेस ऑफ द मदर, मार ब्रेस्ट मिल्क, मार बॉडी रो स्मेल, दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द बेबी. से बर्तमान इंपोर्टेंस दिया टू जीरो सेपरेशन. सो आमे सब बेले माँ पेट उपर डेलीवरी करवा, जदि बेबी ठीक अच्छी रूटीन केयर माँ पेट उपर दी आम सांगे सांगे ब्रेस्ट फीडिंग करके केएमसी को नहीं जावा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट. सो व्हाई दैट इज कॉल्ड ए जीरो सेपरेशन. जीरो सेपरेशन हेले कौन होची ना प्रथम एनवायरनमेंट होची मदर इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड. सो चाइल्ड हैज गॉट द कांटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच इज फुल ऑफ तार मदर रो सब किछि, मार सब किछि. तेणु तार एगुड़ा सब जो फाइन ट्यूनिंग जो जिनसटा परे आसला पोस्टनाटल लाइफ रे, फाइन ट्यूनिंग लाइक लर्निंग, एक्सपीरियंस, इमोशन, ये सब आसीबो बाय एनवायरनमेंटल कांटेक्ट रे पिलार डेवलप करिबो विथ सम डिजीजेस आल्सो. प्रोबायोटिक्स भी आमे पाउचे, हेल्पफुल बैक्टीरिया पाउचे हमर स्किन रे फ्रॉम एनवायरनमेंट. ता सहित आमे डिजीज बैक्टीरिया भी पाउचे, डिजीज वायरस पाउचे, बहुत जिंस हमर एनवायरनमेंट रे आसुचे. Then coming to the first care, that is called as tactile care. So touch is the first sense to develop in a newborn. Already develop he jaychi. Tactile support am पिला कौन दबा, गोटे human being they need a very soft touch. आम मनुष्यर सब एटीट्यूड सब सॉफ्ट टच दरकार, आमको हार्ड टच टा भल लगे. तेणु पोजिशनिंग, प्रथम कथा पोजिशनिंग, पिला सब फ्लेक्स पोजिशन पसंद करिवो. तेणु आम पिला को फ्लेक्स पोजिशन रखिबा. नेस्टिंग यू आर सीइंग नेस्टिंग डिफरेंट डायग्राम. आई विल शो यू, these are different diagrams in our SNCU in Capital Hospital. These are the diagrams of nesting. You can do nesting कले पिला टिके बेटर रहइबो, सिक्योर फील हबो, बेबी को सिक्योर फील हबो. आ जदि टेम्परेचर कम अछि ताले आपण हाइपोथर्मिया प्रोवाइड करिया को कवर करि परिबे पिला को. स्वाडलिंग होछि टू wrap up in different layers. पिला को घोड़े रखिबे, that will help also for child को comfort लागिबो, child को prevention of hypothermia हबो, child protected feel करिवो. So protection. Cluster care कोन? Cluster care होछि आमे जो केयर ता दबाउ चाहछे at a time जो पिला चाहिछथि तांको at a time कर दबा, किंबा गोटे पिला वर्तमान चाहिछि तार जहा काम दरकार सब जा काम at a time विल डू. आमे ब्लड ता से भीतर ड्रॉ करबे, आउ जने दीदी से भीतर नापी चेंज कर दबा, आउ जने से भीतर वेनप्लॉन चेंज कर दबा. So when the child is awake we will do all the care at a time. That is called as cluster care. Message आमे जानिछे, this I will come by one point to point. So this is called nesting. Then कौन हम प्रिफर करवा नेस्टिंग रे पिला को पोजीशन रे. प्रोन पोजीशन पिला को बहुत भल लागे, साइड लाइंग पोजीशन इज आल्सो गुड.
आइदर प्रोन रे रखिले बेटर नले आमे साइड लाइन पोजीशन रे भी पिला को रखि परिबा सडल कवर करिबा टू कीप इन फ्लेक्स्ड पोजीशन कवर करिया पिला को सबले फ्लेक्स्ड पोजीशन रखिया फ्लेक्स्ड पोजीशन लेले तांको टिके भल लागिवो नेस्टिंग द इन्फेंट म ऑलरेडी देखै दैचे डायग्राम नेस्ट करिबा प्रमोट मिड लाइन अलाइनमेंट मिड लाइन रे जमति पिला रहबो सबले सेटा देखिबा हेड सपोर्ट पिला को दरकार बेसी गुडे हेड सपोर्ट देले एक्सटेंशन हे जिवो कि कम देले फ्लेक्शन त नॉर्मल हेड जति की दबा कथा हेड सपोर्ट दे के रखिबा कोन हम अवॉइड करबा पोजीशनिंग रे हम कोन अवॉइड करबा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक बेसी गुडे बेकु टाणी देले पिला को असुविधा फ्रीक्वेंट हेड टर्निंग टू साइड फ्रीक्वेंट टर्न करबानी काई तार ऑलरेडी वेस्टिबुलर सिस्टम एते डेवलप हेइन लोअर एस्टिमेटिव फॉगिंग बिगर डायपर देले कोन हबो लोअर एस्टिमेटिव फॉगिंग हबो एमति टाणी हिक रहबो गोडोटा दबानी रबिंग vigorously जोर रे हमें मेसेज करबानी पिला को हैंडलिंग विथ वेयरिंग वॉच बैंगल्स रिंग्स एगुडा पिंधिकरी पिला को हैंडल करबा हमर तो एसेंशियल भीतर मना दीदी माने सब यूजुअली काढी भी जानती के पिंधि जानतीनी किंतु सेटा करिया उचित नो काहे कि पिला को इंजुरी फिंजुरी हेई पारे केतो लागिले मेसेजिंग आपण माने समस्त यू ऑल नो मेसेज इज ए वेरी एंशिएंट प्रिंसिपल आम पिला बेले मोर भी जेजमा आई मते बहुत मालिश करचंदी सेता बेले बहुत आमे सो मालिश हेचे तो message has definitely it was a controversial topic in the past but now it definitely gives many good result बाहरी पलानी बहुत authors बहुत publication बाहरी पलानी message ऊपर तो जो माने extreme preterm low birth weight तांको खाली ऑयल लगे देले चलिबो बेसी vigorous massage करिया दरकार नै सब बेले मैसेज आमे स्टार्ट करिया सुपाइन पोजीशन रे प्रोन पोजीशन रे किबा साइड लाइन पोजीशन रे करि परिबा फ्रॉम हेड टू टो आगे मुंडरू करिवे मैसेज तापर धीरे धीरे फेस को जिवे तापर एब्डोमेन को जिवे देन फाइनली वी विल मैसेज इन द लिम्स फिंगर शुड बी प्लेस्ड फ्लैट ऑन द इन्फेंट्स बॉडी एंड द मैसेज शुड बी डन विथ मॉडरेट प्रेशर रे मैसेज करिवे आमे देखिचो मैसेज करिकि पिला लोक हेमोरेज फ्रैक्चर करिकि छोट पिला रा आसीबार आमे देखिचो 6 नंबर रे त बेसी विगरस मैसेज न करिकि करिवे आ माने नाही जे लाइट फिदरी टच टू बी अवॉइडेड एमिति तुळा भलिया आपण छुईमे जस्ट जदी जे पर भलिया छुईले पिला को किछ लाभ नाही मैसेज करिवे माने टिके विथ ऑप्टिमम प्रेशर बेसी उडे प्रेशर देबेनी कि कम प्रेशर देबेनी जेंटली एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन जदी तार जॉइंट उडा को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करबे इट शुड बी वेरी जेंटल वे शुड बी वेरी वेरी सुदिंग जेंटल वे रे हमें धीरे धीरे के करबा बेसी उडे ये करबानी कौन डेवलप हुए मैसेज द्वारा पिलार न्यूरो डेवलपमेंटल न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट हुए पिलार वेट गेन बेटर हुए आमे देखिबा स्टडी कराई छि किछि पिला को मैसेज कराई छि किछि पिला को विदाउट मैसेज कराई छि दी जण भितरे आमे स्टडी पैटर्न तार ये कराई छि मेजर कराई छि सेट देखाय जो पिला मैसेज हेचंती दे आर हैविंग ए बेटर ग्रोथ वेट गेन जो माने मैसेज हेनती तांको टिके कम वेट गेन स्लीप पैटर्न निश्चित मैसेज करले स्लीप विल बी बेटर पेन स्ट्रेस पिलार सब बेले कमिबो विथ मैसेज हॉस्पिटल स्टे सब बेले कमिबो पिला जल्दी डिस्चार्ज हे जिवो हॉस्पिटल वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन मु आगुरु कहली जे वेस्टिबुलर सिस्टम इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन ए न्यूबॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ और ए प्रीटर्म रे बिल्कुल हे नथिबो सो कोन अब अब्रप्ट पोजीशन चेंज नेगेटिवली अफेक्ट द इन्फेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सडन आमे पिला को भुस टेकी दबा फटकी धर के टेकी दउ सेटा करबा उचित न कि पिला को सडन तार पोजीशन ता चेंज करिया कथा न स्लोली स्टेडीली यू हैव टू डू इट स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेंटली मूविंग द बॉडी इंस्टेड ऑफ रॉकिंग एंड स्विंगिंग रॉकिंग करबानी पिला को रॉकिंग की स्विंगिंग हलेबा बेसी जोर झुलेबा एटा दरकार नै The mother rhythmic breathing and chest movement during KMC is one of the most soothing experience for preterm. किंतु जो rhythmic movement टा मदर्स रा हार्ट बीट रु हुए रेस्पिरेटरी मूवमेंट रे हुए KMC रे स्किन टू स्किन कांटेक्ट पाइला परे बेबी को सेही कांटेक्ट ही सबुठ भलो लागे दैट rhythmic contraction baby usually likes much बेबी रो apnea हुएनी apnea prematurity तादर हुएनी बेबी रो हार्ट रेट स्टेबल रहे ब्राडिकार्डिया रहे टाकिकार्डिया हुएनी बेसी गुडा हार्ट रेट बढ़ेनी नॉर्मल हार्ट रेट रहइबो पिलार स्ट्रेस मैनेजमेंट हबो स्लीप बेटर हबो सो नो अब्रप्ट सेकिंग नो सडन लिफ्टिंग दीज आर टू डेंजरस थिंग्स वी शुड अवॉइड ऑडिटरी नॉइज इज ऑलवेज हार्मफुल डेफिनेटली हार्मफुल इट प्रोड्यूसेस कौन नॉइज द्वारा प्रॉब्लम है इट प्रोड्यूसेस मच स्ट्रेस इट रिड्यूसेस द स्लीप ऑफ द न्यूबॉर्न. It causes hearing loss. It causes intraventricular hemorrhage
पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमालासिया ए सब हे परबो इन फ्यूचर लोअर्स इंटेलिजेंस बुद्धि कमै दबो इन यूट्रो 40 to 60 decibel of noise actually infant सुने जेतबेले निकु को पळे आसे यूजुअल नॉइज लेवल इन निकु इज 80 to 50 to 80 decibel levels more than 90 decibel for long times ताले कोन हबो हियरिंग लॉस हबो तेनु आमे कोन करबा व्हाट विल बी द स्टेप्स आमे कोन करबा इंटरवेंशंस टू रिड्यूस द नॉइज डिक्रीज नॉइज इन द निकु डिक्रीज मॉनिटरी नॉइज मु एटा आबर स्टेक होल्डर के जन को एडवाइस करिछि रिक्वेस्ट करिछि टू टेक इट इज एज ए मैटर जे जति हमर मॉनिटर रो म्यूजिक सिस्टम साउंडटा जति दीदी ड्यूटी रूम रे बाजी पारंता लाइक होटल रे जेम होउछि आपन दरकार कॉलिंग बेल आपन मारले सेठी रिसेप्शन जाई बाजिबो कॉलिंग बेल लाइक वाइज जदि ही पारंता पिलांगर लोकंगर ड्यूटी रूम रे हमर एसेंशियल बाहर जदि गोटा अलार्म रहंता जे एई नंबर ये रे हमर वार्मर रे प्रॉब्लम हला दिस नंबर वेंटिलेटर गिव सम प्रॉब्लम दैट विल बी इंडिकेटेड देयर रिफ्लेक्टेड देयर ताल कोन बा एसेंशियल भीतर राउंड साउंड कमी जीवो एनीवे राउंड्स एंड रिपोर्ट्स अवे फ्रॉम द बेड साइड आमे पेशेंट को देखिले पेशेंट विषय गोटे किसी डिस्कशन करया कोछि आपन पळांतु आपन रूम को साइड रूम को पळांतु सी डिस्कशन करंतु डोंट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट मदर की मदर थिबो पिला सेट सोई थिबो ता आगे आमे डिस्कस करिबानी स्पीक सॉफ्टली बहुत धीरे धीरे आमे कथा हो पड़िबो इन एसेंशियल मोबाइल टू बी इन वाइब्रेशन मोड मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीबॉडी इज हैविंग ए मोबाइल though starting from doctors to sweeper to ward attendant everybody is having one mobile even two mobiles at times so before entering to the SMCU we have to make it a vibration mode as a principle decrease telephone intercom knowledge अपन लैंड फोन अछि इंटरकम अछि SMCU भितरे साउंड ता कमै दियंतु पूरा जे थिबो से पाखरे से सुनिमो लिफ्टिंग ऑफ चेयर इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग चौकी टेबल जदी टाणी में घर रहिकरी बहुत खराब साउंड हबो दैट विल वेरी मच डिस्टर्बिंग साउंड सो ताको लिफ्ट करिवे rather drag करिबाटू ऑडिटरी स्टिमुलेशन कोन हुए ऑडिटरी स्टिमुलेशन हुए सूदिंग वॉइस ऑफ द मदर स्वीट सॉन्ग्स एंड लाइट म्यूजिक ए तीनटा जिंस रे ऑडिटरी स्टिमुलेशन हबो पिलारो तेनो म्यूजिक थेरापी भी आसी स्लाइट म्यूजिक लाइट म्यूजिक यू कैन गिव इन एसेंशियल स्वीट सॉन्ग यू कैन सिंग इन द एसेंशियल सूदिंग वॉइस ऑफ द मदर इज द मेन ऑडिटरी स्टिमुलेंट फॉर द न्यूबॉर्न माइंड इट प्रीमैच्योर हो कि लो बर्थ हो कि मैच्योर चाइल्ड हो सूदिंग वॉइस मदर रो आ फेस रो सूदिंग फेस ता मा रो एंड ब्रेस्ट मिल्क ए तीनटा जाको होची बेस्ट स्टिमुलेंट फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी दैट यू सी हाउ द नेचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट हाउ द गॉड इज इंपोर्टेंट हाउ ही हैज गिवन द परफेक्ट थिंग्स टू द परफेक्ट वुमन हु इज गिविंग बर्थ टू द बेबी इट इज नॉट विथ द फादर इट इज ओनली द विथ द मदर दैट थिंग हैपेंस olfactory and gustatory here is also very important things interesting things you see olfactory smell pilankar develop कर जाय 32 weeks रे in utero likewise also gustatory taste भी develop कर जाय so neonate can discriminate can remember can habituate can smell and can taste newborn करि पारिबे हमर होय त आईडिया नै जे न्यूबॉर्न माने सुंगी पार नथिबे न्यूबॉर्न माने टेस्ट बारी पार नथिबे से ठीक बारी पारिबे सबुटो इंटरेस्टिंग है olfactory and gustatory sensation promoted by only breastfeeding number 1 is breastfeeding number 2 is KMC number 3 is non nutritive sucking so these things ए तीनटा जते हमें कर दबा ताले olfactory आ gustatory दीटा एक सेंसेशन हमर बॉडी जीवो हमें एटा को बढ़ाइबा को चाहछे एटा को कमेबा को चाहतले हमें लाइट विजन एंड ऑलरेडी विजन एंड ऑडिटरी मदर smell of her breast milk is the best olfactory stimulant which also reduces stress eta kon hochi मार खीर आ तार खीर रो स्मेल एटा होची पिल्लार olfactory sensation smell sensation बढ़े बाय this is the best thing avoid कोन avoid करिबा use perfumes मोर क्वेश्चन देइतिली सैंडलवुड स्मेल भलो धूपकाठी बासना दरकार नहीं पिल्ला माने सेत्र स्ट्रेस हो पिल्ला को you should not use परफ्यूम स्नेल पेंट एगुडा यूज करिबे नै एगुडा यूज करिबे नै ओपनिंग पंजेंट स्मेलिंग बॉटल्स हमर जति डिसइनफेक्टेंट रहउची एसेंशियल भितरे रहउची जतक सेगुडा को यूज करिबे नै व्हेन न्यूबॉर्न इज देयर तार स्मेल गुडा को न्यूबॉर्न टॉलरेट करंती दोस आर इरिटेंट्स फॉर द न्यूबॉर्न इवन नेल पेंट भी नेल पॉलिश रो पेंट भी इवन परफ्यूम्स दोस आर नॉट गुड फॉर न्यूबॉर्न दे यूज्ड टू देयर
olfactory sense is going to be disturbed, ता द्वारा disturb हुए, rather stimulate हुए. Vision is the last thing to develop. Last and the most vital sense. देखिबाटा सबुठ important. Fetal life you see in the abdomen, the baby is totally dark, in the darkness. Baby was remained. So Niku को पढ़े आसला immediately bright light हमें लगे देले. So what will happen to his eyesight? Continuous light exposure. Usually range is 50 to 150 foot candles. आमे procedure और phototherapy light रे आमे दोचे 200 to 400 foot candles. So you see how much more light we are giving for the newborn. So bright light रे problem कौन हुए? Reduces sleep. पिलार sleep reduce हो जिबो. पिलार endogenous brain cell activity कमिबो. Circadian rhythm पिलार कमिबो. तार problem हबो. Effect on growth and development ऊपर effect पड़िबो. Risk of ROP is also there. Repeated light exposure it can also give rise to ROP. So safe level for NICU not established till date. आज पर्यंत को level light टा हमें use कले better NICU पाई सेटा एजे prove हेनी. Avoid exposure to bright light anyway. हमें एटा कौन करिवा light को exposure करिवानी. Available natural light जदुर possible हमें use करिवा. हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लगी एसेंशियल तो लाइट आसुची जदी दरकार नै सेता लाइट हमको लाइट दबा दरकार नै. यूजुअली हम यूज करिवा स्पॉट लाइट की प्रोसीजरल लाइट व्हेनेवर रिक्वायर्ड जतो दरकार हम टोटल लाइट न करी से एरिया टा केवल प्रोसीजरल लाइट पकई से एरिया रे काम करिवा. डिमिंग फैसिलिटी रखियो पड़िबो सब एसेंशियल रे राति रे डिम कर दो पड़िबो लाइट गुडा को. यूज कलर ड्रेस एंड कैप रेड ग्रीन ए कलर गुडा हेले विजुअल इंप्रूवमेंट हुए पिलांकर. सो हमें लाइट कलर यूजुअली कलर ड्रेस कलर कैप एगुड़ा सब यूज कले पिलांकर लाइट डेवलपमेंट हम. सबुठ इंटरेस्टिंग लाइन मु लास्ट को लिखिछि. मदर्स फेस इज द बेस्ट विजुअल स्टिमुलेटर फॉर प्रीटर्म बेबीज. अगेन यू सी नेचर हैज गिवन ऑल थिंग्स. हमें किछ करू ना हमें खाली रिसर्च करी वी आर जस्ट इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स एंड एडिंग बट एवरीथिंग इज गिवन बाय द गॉड. ओनली अगेन द मदर्स फेस इज द बेस्ट विजुअल स्टिमुलेटर फॉर द प्रीटर्म बेबीज. So another thing research has gone that cycled lighting better than near darkness. पूरा अंधार रहया अपेक्षा मझिरे मझिरे अल्प लाइट देले that promotes better brain development, better vision development. So कौन हुए circadian rhythm develop करे, more time sleep stage रे पिला रहे, weight gain, motor activity, heart rate सब ठीक रहे. heart rate कमे, motor activity level भी कमिबो, weight gain better हबो. So मझिरे मझिरे लाइट दिके हमें टोटल डार्कनेस भी करिया कथा नो. टोटल डार्क न करके साइकिल्ड लाइट देले बेटर डेवलपमेंट हुए. स्लीप प्रमोट्स नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ. स्लीप दरकार न्यूबॉर्न को जेते टाइम स्लीप हबो पिलार ब्रेन डेवलपमेंट सेते अधिका हबो. लेस स्लीप लीड्स टू न्यूरोनल डेथ एंड रिड्यूसेस ब्रेन मास. जेते कम पिला सोइबो ब्रेन मास छोटो हबो neuronal death habo. So baby likes to sleep most times. That is womb lag. That is called as womb lag. Achieved by well control of light and sound. आमे जदे light and sound दिटा को essential रे ठीक control करि परिबा, cluster care देई परिबा, मु कहबी केमिति, then only we are going to control then we are going to promote the sleep to a newborn. ताले हमर कोन हबो ना newborn को अधिका sleep हबो. नले newborn sleep न रहले हबोनी. तार development ठीक हबोनी. Protected sleep. केमिति हम भलो sleep दबा. Undisturbed sleep is very important for their brain growth. Fetal position enables to develop appropriate muscle tone. So LBW PT baby is unable to maintain fetal position due to the low tone and gravitational force. जेतु gravitational force रुचि तनु से माने fetal position maintain करि पारंतिनी बाहरे. मदर्स रूम रे maintain करूथिबे. बाहर को असले fetal position maintain करबा difficult हो जाय. Sleep can be promoted by KMC, skin to skin contact रहला, nesting रे भी improve हबो. Clustering of activities of daily living, messaging and healing environment. So these all are important to promote better sleep in a newborn. What problem we in NICU? What is the problem? Sleep deprivation occurs due to repeated handling for treatment and activities of daily living. What will happen? Dina dita baji galani. ए दीदीर शिफ्ट सरी होची. अरे मोर तो शिफ्ट सरी होची पिलांकर सब काम करिकि मु जिबी तो पिला सोइथिले भी मु ताकू उठै देबे काम केते जल्दी सारी के मो शिफ्ट सरला को मु पळेबी काई से दीदी जे आसीबो नेक्स्ट शी विल बी एंग्री ऑन मी जे तू तो काम साइलुनी मो पई काम रखि दी पळेबी. सो दिस शुड नॉट बी आवर एटीट्यूड इन ए NICU.
व्हाट हैपेंस ना जेतेबेले स्लीप डिप्राइवेशन कहबी नेक्स्ट स्लाइड रे इट विल कम जेतेबेले पिला चाहिथिबो से टाइम रे हमें कोन करिया सब जा काम करतबा जेतेबेले पिला सोउची ताकू सोया गु दियो दैट शुड बी आवर मोटो देखो मु कहली केयर गिविंग एक्टिविटीज आज पर इन्फेंट्स एक्सप्रेशन रादर देन प्रोटोकॉल ड्रिवन हमर एटा करिवार अछि बोले हमें करिया सेमिति नो रादर आज पर इन्फेंट्स एक्सप्रेशन जेतेबेले पिला निदुर उठी गला चाहिला अरे सेति को तारा नापी चेंज करो ताकू आईवी दबार अछि दियो जहा इंजेक्शन दबार अछि दियो तार सब काम सही टाइम रे कर दियो सो नाइ द चाइल्ड इज अवेक पूरी पिला सोई पड़ला लेट अस फॉरगेट वेट सी चाहिमा पई हमें अपेक्षा करिया पड़ियो सो हमें विल गिव इंपोर्टेंस टू द स्लीप ऑफ ए न्यूबॉर्न calm the child while doing ADL activities of daily living ADL if stress signs are seen जति stress पिलार अछि कांदुची पिला कि गोटे इरिटेट होला बळे होउची ताले पिला को आगे काम करिबा आगे काम एंड क्वाइट करके तापर हमें करिबा अन्य काम पिला को आगे काम करिया दरकार कोन ADL can easily done together in a cluster when the infant is awake instead of disturbing the sleep by doing these activities individually at different times मुझे हा कहली डिफरेंट टाइप रे इंडिविजुअली करबा अपेक्षा जेतेबेले पिला चाहिची से बेले हमें सब जाक काम क्लस्टर करके एट ए टाइम कर दबा सो दैट पिला को आ फर्दर हमें डिस्टर्ब करबा नै नियोनाटल पेन पिला को कष्ट होय ना नै मिसकनसेप्शन हम मुंडरे सब अछि बहुत जन को मुंडरे अछि कोन न्यूबॉर्न्स लैक एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू ट्रांसमिट पेन सेंसेशन न्यूबॉर्न कर पेन सेंसेशन जिबा किछि नाइ पाथवे cannot express pain sensation pain pila express kari parantini have no memory of pain pila ka memory bi nahi pain pai would not tolerate anesthesia tolerate karibe nete choto pila eguda sab misconception am brain अछि what is the reality is they are able to recognize pain they are able to recognize experience pain and they can also remember pain newborn sab bijako kari paribe physiological cues kon dekhebo pila in stress ना चेंज इन हार्ट रेट कौन हम ना पिलार हार्ट रेट बढ़ी जीवो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी जीवो कलर चेंज हम ट्रेमर हम ट्विचिंग हम एगुडा हेले हमें जानिबा जे पिलार गोटे किछि प्रॉब्लम होछि फिजियोलॉजिकल क्यूज किछि प्रॉब्लम होनो दीज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस नॉर्मल चेंज विसरल साइंस कौन हम हिकअप हम कफिंग हम स्पिटिंग ड्रूलिंग वोमिटिंग दीज आर ऑल विसरल साइंस so these are motor cues infant uses to communicate pain and stress so ei sign roile ame janiba je pilata kiछि express kariya chahuchi tar something problem hochi he wants to express crying is the most common cue लक्षण कोन ते कांदीबाटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट कांदीला यदि पिला हमें जानले जे पिलार निश्चित भाबे किछि गोटे प्रॉब्लम होउछ तार child is not comfortable either the child is feeling some pain or the child is under stress or the child is having hunger pain so anyway we should know that child is having some problem how will you manage the pain there is a PEEP score we should not know so detail actually that is a more than 10 is severe there are 5 categories gestational age behavioral state of the baby change in heart rate change in SpO2 during procedure then facial expression these are all our component of PEEP scale we should not go in detail to this thing pain management in newborn prathama katha la we have to avoid the noxious stimuli what are present to give pain to a newborn avoid bright light loud noise ए दिटा तो हमें सीधा avoid कर दबा limiting number of painful procedures थरे नहला ब्लड ड्रॉ हमें 3 थर लेका पुडीबा नहीं पिला मु सब बेले कहि जणे दीदी हाथ रे नहला संगे संगे आपण आउ जणे दीदी को दियंतु करिया पे डोंट ट्राई फॉर सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपण निजे चेष्टा करिबेन लिमिटिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरवेंशन हैज टू बी लिमिटेड एज फार एज पॉसिबल जत्ते पारो सेते हमें लिमिट करिबा इन्वेस्टिगेशन इन ए पिला को फोड़िबा इंटरवेंशन करिबा स्वाडलिंग फैसिलिटेटेड टॉकिंग डिस्ट्रैक्शन मेजर्स लाइक टॉकिंग म्यूजिक मां को कहबा पिला सहित फुसफुसी कथा हो ता मुह को नेकी सो दैट पिलार पेन कम हो अपन जेतोले प्रोसीजर करछंती tactile stimulation like stroking caressing messaging these all are things which usually promotes better pain management pain ta कमी जिवो एगुडा करे पिला को आउसिबे पिला को मेसेज करबे एगुडा करे पेन कमिबो बाकी ड्रग्स भी अछि कोन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स फार्माकोलॉजिकल मेजर्स नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हला इंटरवेंशन पोजिशनिंग कंटेनमेंट पिला को देखिबे चित सोई के पिला कांतबो ताकू सुपाइन पुका जगह ताकू प्रोन पोजीशन कर देबे कान बंद हिजो स्वाडलिंग कवर करके धर देबे हाथ रे पिला रो
pain कमी जिवो non nutritive sucking pacifiers also can reduce pain skin to skin contact can reduce pain music can reduce pain slow music breast milk but don't show a mobile to the baby I'll come to that music आपण सुनै परिबे किंतु मोबाइल देखेबे नहीं एते प्रीटर्म पिला breast milk is a good pain management breast milk is a very good pain management करू oral glucose sucrose आजकल बहुत कंपनी आसी गलानी oral sucrose solution इंजेक्शन दबा कर टिके पियाई देले पिलाकर पेन कम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन दो इट इज very rare it is only needed when we do some surgical procedure or some interesting operation or a difficult thing सेतबेले हमको लोकल एनेस्थेसिया रीजनल एनेस्थेसिया एगुडा सब दबाव पड़े but the pharmacological intervention for pain is not at all required in newborn having mild pain coming to the kangaroo mother care as I have told you the everything including everything is covered by kangaroo mother care this developmentally supportive care every aspect is covered by only single window solution that is called as kangaroo mother care you see tactile is there you see olfactory is there vestibular is there gustatory is there safe environment pila paila mother's chest is the safest environment and the best environment for delivery auditory paila stimulation and visual paila so all the parts are stimulated so kangaroo mother care can give any all types of developmental supportive care कौन केएमसी रे हमको भलो हुए हम तो सब जानी छे but still then I will repeat it because significant reduction in neonatal mortality all over world it has been studied thermoregulation mother is the best incubator can keep the baby warm during transportation also kwa nei jibo baby mother share karibo nei jibo jai peribo physiological stability temperature respiratory rate heart rate oxygen saturation everything will be normal under control apnea कमिबो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कमिबो न्यूबॉर्न रो इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया सबले कमिबो रिस्क ऑफ नसोकोमियल इन्फेक्शन सबले कम मा छाती रहला इन्फेक्शन रो चांस नहीं जोटी बेड रे सोइलो बाहर एजेंट लागिला पिला धरे इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली हबो मदर रो ऑक्सीटोसिन लेवल पडिबो तेनु डेफिनेटली देयर विल बी बेटर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एंड बेटर फीडिंग न्यूरो डेवलपमेंटल this is most important because it's a long term involvement kon improves neurological psychomotor development organizes behavior sleep wake cycle and quality of sleep newborn सबले improve hobo ame jodi KMC kariba facilitates cognitive development and makes baby more intelligent तो जो पिला कंगारू मदर केयर बाहर चंदी जो माने कन्वेंशनल केयर पाई चंदी आ जो माने कंगारू मदर केयर पाई चंदी कंगारू फाउंडेशन जेतले करिछि रिसर्च 20 इयर्स रो स्टडी हला 20 इयर्स रो स्टडी पर बाहर छि जे जो पिला माने कन्वेंशनल केयर पाइले केवल इनक्यूबेटर भीतर रहले वार्मर रहले केयर पाइ गला आ किछि पिला केवल कंगारू मदर केयर पाइले सो देखाय छि कंगारू मदर केयर बेबीज कर ए क्वालिटी ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट हैज बिकम मच बेटर देन the children than the babies who have got this conventional care. Developmental supportive care also impacts several development sensory system like tactile, olfactory, vestibular. I have already explained involvement and satisfaction of parents. This is also most important. You see, if your parents are not satisfied with your treatment, there is no value of doing. We are doing for the newborn baby, but simultaneously parents also can be convinced and should realize our effort that what we are doing. They should, then only they will realize that how our work is important and they will give importance to us. Otherwise, they will not give importance. So now what we are doing, we are involving the parents, we are involving the mother, we are involving the father. So the whole family is involved. Tanko mundre au kisi doubt roilani, medical case komila, complaint komijibo automatically because they are seeing that what we are doing. So आजिकल नुआ गोटे रिवर्स केएमसी आसी मु कहबी मार छाती ऊपर विथ केएमसी पोजीशन रे भी वी आर डूइंग माइनर ऑपरेशंस माइनर छोट छोट हमें जहा चाहूचे धर एनजीटी हमें दबाउ चाहूचे मार सेही कंगारू मदर केयर पोजीशन रे वी कैन गिव एनजीटी मदर केयर पोजीशन रे हमें छोटे छोटे जिंस कर दे परिबा गोटे भेनी सेक्शन कर दे परिबा सेही मदर चेस्ट रखी गिरी पिला को छोटे छोटे मैन्युवर कैन बी डन रेटिनोपैथी स्कैन कर दे परिबा रेटिना एग्जामिनेशन करि परिबा आरओपी ये करि परिबे टारोपी टेस्टिंग सब जा करी हबो विथ रिवर्स केएमसी माने केएमसी रे पिलाटा रहउची मा पटुको एमिति उल्टा रहबो माटा पिलाटा
उल्टा रखिकी आम रखिकी वी कैन डू बिकॉज पिला जेतु छाती रे रहिला मार छाती रे लागी रहिला डेफिनेटली तार पेन कम हबो तार स्ट्रेस कम हबो मदर रो एंजाइटी भी कम सो बोथ वे इट इज हेल्पफुल games and pain prevents negative effects of painful and stressful procedure and improves quality of sleep already I have explained long term what are the long term development role of KMC cognitive development intelligence memory and language everything develops with KMC behavioral emotional status of the newborn will definitely improve social functioning ability to maintain social relation सांगसाथी सहित मिसिबो तार पियर ग्रुप सहित मिसिबो से जो रिलेशन सोशल इंटरेक्शन एवडा बेटर हबो सेल्फ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी बेटर स्कूल एडाप्टेशन से पिला मानकर बेटर हबो जो माने केएमसी नेचर न्यूरो एंडोक्राइन बेनिफिट्स this is recently this has come that oxytocin I will explain you in this slide I will explain you skin to skin contact. So this slide I have brought from Sasibani madam. She has got it from UNICEF also. So this is a nice slide. I also copied this slide. Do you see in skin to skin contact, immediately oxytocin is released in the mother, which is also going some amount to the breast milk to the baby. What is the role of oxygen? Oxytocin, you see. Oxytocin having a variety of roles. So endocrine system management, endocrine system, the hormones are already controlling the newborn's health. How? You see, that activates the vagal nuclei, so GI function is improved, increased growth, stabilizes cardiovascular system, respiratory stability is also there due to only oxytocin. Anti-stress effect oxytocin ro achi, anti-inflammatory effect achi, better immunity achi, better breast milk hela, volume breast milk बढ़िला तेणु पिला better immunity पाइला, better survival हला. एपटे ability to regularize state organization, quite alert state, less crying, पिला जेतु stress free गला, so temperature synchrony, warm breast milk, warm breast skin temperature, analgesic effect, K and gamma upward receptors are being stimulated, so no tolerance, analgesic effect better haba, sedation effect better haba, sleep organize hejibo, sleep cycle organize hejibo, neurodevelopmental brain maturation will be more, social interaction will be more, bonding attachment will be more. So in one way, oxytocin gives rise to all these benefits in the liver. So you see, circulation in the skin overlying the breast increase during suckling, and suckling becomes pleasant. मार तले क्षीरटा पिला खाए मार से ब्रेस्ट ऊपर येटा स्किन टा भी वार्म हो जाए, so it gives a warm feeling to the newborn, which is also very comfortable पिला को लागे. आउ जेतल suckling पिला को मजा लागे. Milk injection is triggered suckling and warmth experience. GI hormone stimulates digestion. I have already explained in that graph. Reduction in cortisol level. What happens? आमे जेतले डेलीवरी करिकि पिलाट को मदर टू डिटैच कर दूचे, कौन होची, what happens? Immediately cortisol level पिला देर बढ़ी जाउची. So cortisol produces more stress gives rise to all the problems. So सेति पे zero separation आपण जति करिवे, मदर को बेबी को लगे की रखिवे, जेते as far as possible you will avoid to separate the mother, सेते problem होबो. It has been shown that reduction in cortisol level in stable preterm receiving KMC more than 60% for more than 20 minutes, सेमानकर बहुत cortisol level कमी की, पिलांकर stress level बहुत कमी की, तांकर better result देछि. New interventions and future perspectives आमे कोन एक्सपेक्ट करिया, याद है फ्यूचर कोन हबा जाउछि. पेरेंट फोकस्ड केयर ऑलरेडी आमे करि छलेनी. सफदरजंग हॉस्पिटल रे मु देखिली सन वार्ड रे बहुत पेरेंट्स मदर माने अछंती, सेमती मदर कर चेस्ट ऊपर पिला अछि ऑलरेडी केएमसी रे एक्टिविटीज करा होछि, दीदी माने जे एक्टिविटीज करछन देखि देली. को बेडिंग फॉर ट्विन्स हमर जेतु बेड अभाव आमे एटा भी फ्यूचर रे भाइ परिबा. स्पिरिचुअल एंड कल्चरल केयर, जदि पिलाटा सुनी पारुछि लाइट म्यूजिक दबा बदल रे आमे ताकू स्पिरिचुअल एंड कल्चरल केयर देले, दैट चाइल्ड will become a spiritually good person later life rabo. This concept is coming also. Quality and assessment and improvement, Poki we all are doing, our dear Devrari sir is doing, all of you know
that unless you see the quality, unless we will recognize our own fault, आम निजर जदि भूल आम न बाहर करि परिबा ताको यदि आम रेक्टिफाई न करि परिबा, then there is no need of doing anything. आम क्वालिटी पाइबानी. So quality is most important. खाली क्वांटिटी कर देला हमनी simultaneously we have to see whether we are doing quality or not. Without quality KMC is not proper. KMC यदि ठीक क्वालिटी न करिवो KMC result ठीक दबनी. Use of telemedicine in NICU, though it was very much obscure in the past, now after COVID we are very much accustomed to this thing, so we can use telemedicine facility. Our madam, ethical care issues we have to see. Now we are, though as we are involving the parents, so ethical care have business problem huni, ethical care kichi problem hapani. Individual rooms in NICU may be a future concept for individual cabins. जमते हमर adult patient को रोचे हमें सेटा भी चिंता करि परिबा इन निकु रे भी individual cabin करिया पे गोटे मदर को पाई छोटिया छोटिया क्यूबिकल करि गिरी जमते हम गोटे रूम रे केमसी करूचे किंतु छोटिया छोटिया क्यूबिकल कर दवा जमती सेपरेट हेगी रखलो होइबे, that will also better. Involvement of physiotherapist बहुत एसेंशियल अछंती मेट्रोपोल्स रे बड़ सिटीज रे, but in like cities like Bhubaneswar, Cuttack and our Odisha, we are devoid of all these things, but we will slowly it will be incorporated into our SNCU NICU, so we can develop these things later on. Developmental psychologist to be posted to see the psychology of the mother and to train the mother how to give psychological care to the newborn, training to the newborn from the childhood period to kemi dabu se teaching dabo. Public health nurse, because आमे community outreach work भी करिया उपरिबा हमको आधे जेति की पिला कम नहीं कि केएमसी नहीं कि भलो है कि प्रीटर्म जाउचंदी, we have to follow up them in the community, otherwise our value किछ रहिलानी से जीव 2 मास पर भूली जीव किछ करिवनी. So we have to follow up that. So public health nurse, medical social worker in NICU is a must. एमाने रहिले they will coordinate us. So data entry operator हमर सब data entry कला आमे समस्तकर फोन नंबर रहिला आमे ट्रैकिंग कले से माने आसिले कि नै हाई रिस्क क्लिनिक को देखिया पे सेडा देखिले साइमल्टेनियसली आमे आशा उपचार पे whether he is doing proper KMC करछि ना नै ता गारे घरे करछि कि नै सेटा हमको बुझेब को पड़िबो. So these are the totally I have covered all developmental supportive care. Thank you very much for a patient hearing. Thank you आशुतोष भाई, आपनकर बढ़िया प्रेजेंटेशन थिला, बहुत लंबा है ना ठीक अछि. नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन. मु खाली गोटे पद कहि देबा चाहूची हमर दीदी माने सुनंतु गोटे बेसिक प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट. पिलाटा मा पेट भितरे जो केयरटा पाउथला सेटा आउ 2 मास से पाई थांदा से पेटर मैगी जेतु पळे आसिला तेनु सेई जो मा पेटर जो केयरटा को हमें बाहर केते संभव देई परबा. दैट इज द बेस ऑफ डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर. ओडिया रे बुझे देली ए जिंस तो दायित्व सर. थैंक यू. बढ़िया मोरी बहुत डाउट क्लियर हला. बढ़िया कहले आशुतोष भाई, वेरी नाइस, एक्सीलेंट. मैडम केतरा क्वेश्चन अछि स्पीकर बढ़िया कहले. क्वेश्चन आंसर पे समय अछि आदित्य? हां मैडम क्वेश्चन आंसर अछि. तले कीर्ति मैडम को जो प्रश्न पचारे क्षमा टिके इंटरवेन करछि. गोटिए कथा आशुतोष सर, बेसिक जिंस आपण जो कहले डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर सेटा भी हम पुराना ये अछि, पुराना जुगर भी अछि. आपण एग्जांपल नियंतु अभिमन्युर. अभिमन्यु चक्रव्यूह कोड सिखिथिला से मा पेट्रो सब सुनिथिला जेहेतु सुभद्रा सोई पडिले एवं अर्जुन बंद कर देले बाहरी बाटा ये तेणु से सिखि नथला बाहरी बाटा. केवल जेहेतु सुभद्रा चेइथेले छुआटा सुनुथिला तेणु से जहा अर्जुन कहले भेदी बाटा सिखिला, बाहरी बाटा सिखि परला. ए की कहूची सर एटाला आपनकर ऑडिटरी सुनले एग्जांपल कस्टटरी एग्जांपल कहूची आपण माने मार्क करिवे जेतबेला मदर प्रेगनेंसी टाइम रे जोटा खाया को पसंद करथबो आपण देखिबे 70% पिला सेटा पसंद थिबो खाइबाटा तापरे सब्सिक्वेंटली सेइथमे जेतले यूजुअली छुआ पाटरी जदी लाळ बहु थाए ताल ताकू कोन कहंती अरे तो माटा कोन तो मार बापर कोन सादे रे एई जिंसटा आनी देई नथले तो पाटरी लाळ बहुची. तेणु सब गुडा हमर अछि किंतु हमें ताकू कैरी आउट करूनी. एमती हम आदित्य सार कृपारू आ स्वामीर कृपारू जदि एमती गुड़ाक चलो एकदम रूट तलू जीव ताले निश्चित आम माने बेनिफिटेड हबा. पूर्व आशुतोष को बहुत 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 धन्यवाद दउची. माने एते सुंदर कथा
एते सुंदर कथा आज कहला जोटे कि मो सांग स्वामी श्यामा मैडम भी कहले मु जान नथिली से गुडा कोई मु जानथिली किछि कथा रे एई किछि कथा मु भी से कथा को मु भी एज रे भी पेडियाट्रिशियन भी कि मु भी सब जान नथिली केते गुडा कथा तो केते भलो कथा कहि दे सेरा हम पेडियाट्रिक फोरम रे डिस्कशन करिवु एठी नुवा आउ किंतु जति को कहि बहुत बढ़िया रूट लेवल को ठीक जति दरकार सेति कहि सेटा बहुत मालिश करिया कथा हम जान नथु ना ना मालिश तो करियो मोर एक्सपीरियंस कोची मोर ओटे पेशेंट को से प्रेगनेंसी बेले हनुमान 40 सबले बड़ पाटी के बोले ता छुआटा ठीक 3 वर्ष बयस रे कोट किछि सिखिनी हनुमान 40 बोली चलछि हां दिस इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल नाउ आउ हम ऑब्स्टेट्रिशियंस कीर्ति मैडम ऑल ऑब्स्टेट्रिशियंस मस्ट बी अवेयर जे हमें चेंज सोसाइटी को चेंज कर दे परिबा फल रे और भलो उच्च कोटर पिला जन्म करि परिबा हम जदी से मन को इनता दबा स्पिरिचुअल मैडम आउर गोटे कांसेप्ट भी आसलानी गोटे कांसेप्ट आसी छि वर्तमान न्यूट्री जेनेटिक्स आपण जो भलिया पिला चाहउचंती जो भलिया जो इंटेलिजेंस रो पिला चाहउचंती जो यार पिला चाहउचंती से भलिया डाइट देकरी आपनकर पिला ऊपर चेंज कर दे परिबे डिलीवरी टाइम दिस इज न्यू कांसेप्ट इज कमिंग न्यूट्री जेनेटिक्स सेड गोटिया कथा खाली ऐड कर जी जते बेले हमें मालिश करूचे जोटा कि हमें जेमती वार्म ऑयल स्वामी तुम लिखितल जे प्री वार्म्ड कोकोनट घर मरा कोकोनट ऑयल शुड बी प्री वार्म्ड जेमती प्री वार्म्ड कोकोनट ऑयल नडिया तेल टाको आगुरु गरम करिवो सिमती भी वार्म एनवायरनमेंट रे छुआ को मालिश करिवो बारंडा रे आनी कि दुआर रे आनी कि मालिश करिवनी घर भीतर सब आडे दुआर मो फार्म बंद करी टिके वार्म रखी के मालिश कर नला हमरोटा सबुले कॉमन कंसेप्शन जे तू छुआ को मालिश कर देलो नडिया तेल रे ठंडा हे गला समस्त आसिकरी पेडियाट्रिशियन बेकटा को धरिबे तेनो वार्म एनवायरनमेंट रे भी मालिश करा जिवो सर मु देखुतली पृथ्वी रे सबटु अधिका यूज होची सोरिष तेल कि सोरिष तेलटा मना सबटु होची मस्टर्ड ऑयल इज नॉट इंडिकेटेड फॉर मेसेजिंग एंड वर्ल्ड रो सबटु अधिका यूज करन मस्टर्ड ऑयल सबटु मस्टर्ड ऑयल यूज करछ अधिका अच्छा मैं इंटरवीन हां सर आदित्य यस कथा हो कोन कि हमर ए जो फोरम टा पे एते ताको लेंदी करबा एते भीतर को जाय डिस्कशन कर एक्चुअली द फोरम इज समथिंग डिफरेंट फोरम हम माने टिके आहुरी टिके कंसाइज हेबा पड़िबो स्पेसिफिक मैसेज तांको देबा पड़िबो ए डिटेल्स कथा ए फोरम नाही फोरम हमर अछि आईएपी अछि एनएनएफ अछि हमर आईएमएस सीएमई गुडा अछि दैट इज डिफरेंट किंतु मु समस्त को रिक्वेस्ट करी प्लीज डोंट माइंड आमे आहुरी टिके कंसाइज बिकॉज़ एबे ऑलरेडी 5:30 हलानी आमे 3 टारू स्टार्ट करचे so the span of receiving the knowledge is also not that lengthy for all so seman ko bhi kahiba ko kichi sujog dia jau participant man ko let them speak so that will be helpful. I am sorry if I have hurt anybody. No, you are absolutely right. You are absolutely right. We should not over कीर्ति मैडम को कहउतले भूली जबानी हमर जो मानो पार्टिसिपेंट मानो पाइट कराउची जो मानो पाइट कराउची यू शुड नॉट फॉरगेट देम कीर्ति मैडम को मोडे क्वेश्चन पचाउची फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आजिकली बहुत सिजेरियन सेक्शन होची सिजेरियन सेक्शन रे भी स्कार रप्चर गोटे बहुत इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज से दृष्टिरो केमिति हमें रिकॉग्नाइज करि परिबा स्कार रप्चर एवं जो ब्लीडिंग टा हला स्कार जो को हेछि कि नहीं केमि हमर पार्टिसिपेंट ने जानि परिबे ए कीर्ति मैडम अपन को प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हमर यूजुअली सब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होछि जोटी स्कार रप्चर टा डिलीवरी बेले हबो लेबर पेन स्टार्ट हला परे से ही हबो लेबर पेन स्टार्ट हला बेले ताको कांस्टेंटली गोटे लोअर सेगमेंट लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तळ पार्ट रे तार कांस्टेंटली पेन हबो हठात सेटा गोटे गिववे भलिया लागिवो ताको बहुत गुडे पेशेंट से कंप्लेन भी करती आ ता संगे तांकर हार्ट रेट बढ़ी जिवो टाकिकार्डिया हबो आ गुटे स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग भी हबो से ब्लीडिंग ता एते अधिका नथिबो किंतु टाकिकार्डिया और पेशेंट विल गो इनटू शॉक ब्लड प्रेशर बहुत कम थिबो आ प्रीवियस सिजेरियन हिस्ट्री थिबो आ तापर रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन वंस रप्चर हे गेला पर रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन होनो दीस आर द क्लूज ओके तनु समस्त बहुत सचेतन रहै दरकार VHND को प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन आसीबे मन को रेड कार्ड तो पड़िबो मैडम मोटे कहबी यस मैडम हां को
ଏବେ ତ सर ରୁଟିନଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍स ତାଙ୍କ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଲୋକାଲାଇଜେସନଟା ମେନସନ କରାହବ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟେରିୟରଲି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ମର୍ବିଡାଡ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରେ ଚାନ୍ସ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସିଜେରିଆନ ସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦବା ତାଙ୍କର ଚେକଅପ ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାର କରିବା ଯେ ସ୍କାର ଡେସିଜେନ୍ସ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି କିଛି ପେନ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଆସିବେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରିଭିଆ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ଚୟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅଛି ଆମେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି and it is a very dangerous condition difficult to manage ଆମେ ବହୁତ ଏବେ ସେଟା ଫେସ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟେରିୟର ପିରିୟଡ ରେ ହିଁ ମୋଟିଭେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଟର୍ସରୀ କେୟାର ଯାଇକି ଡେଲିଭରି କରିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଥିଲା 1 in 20,000 ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଆକ୍ରିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ 1 in 300 500 ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ପ୍ରିଭିଆ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଆକ୍ରିଟା ଥିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏଜ୍ ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରିଭିଆ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରିଭିଆ ଓଟି କୁ ନବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଟା ଆଣ୍ଟେରିୟରଲି ଅଛି ନା ପୋଷ୍ଟେରିୟରଲି ଅଛି ଯଦି ଆଣ୍ଟେରିୟର ଲୋ ଲାଇଂ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ଲଡ ରଖି ତାର ହିଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି ର କନସେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବେ ଯଦି ପାରିବେ କରିବେ ନହେଲେ ହାୟର ସେଣ୍ଟର ହାୟର ସେଣ୍ଟର ଡପଲର କରି ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଡପଲର ନ ହେଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ହାୟର ସେଣ୍ଟର କୁ ରିଫର କରିବାଟା ଉଚିତ थैंक यू मैडम के पार्टिसिपेंट्स माने के पचारिबे यस पार्टिसिपेंट मानु टिके रिक्वेस्ट अनम्यूट कर करबी देबे हां हां को पार्टिसिपेंट मानु रिक्वेस्ट करबी कि जदी टिके पचारिया पई चाहउचंती अनम्यूट करके पचारंतु सर आउ गोटे कथा खाली आब्रप्टियो प्लासेंटी आमे जदी रूटीनली फॉलिक एसिड देबा एवं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करबा ताहले आमे आब्रप्टियो प्लासेंटी भी टिके कंट्रोल कर पारे इंसिडेंस ता सो देज ए दीटा को समस्त मने रखी एटा तो दिया होउची आ ब्लड प्रेशर चेकअप ता टिके बेले बेले एपट सेपट होउची सेटा को टिके कंट्रोल करले आब्रप्टियो रो इंसिडेंस भी कमिबो पार्टिसिपेंट मानू टिके रिक्वेस्ट करबी अनम्यूट करके पचारंतु अनम्यूट करके पचारंतु जदी पचारे चाहउचंती पचारंतु कारण ए प्रोग्राम ता तुमरी मानन पे की हेची तुमे यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन दिस वेबिनार तुमरो नॉलेज ता केते बढ़िला मां माने आ छुआ माने केते सुरक्षित ही रही पले तुम मन का हाथ रे सेति पई एटा करा होची तुमको तुमरो जहां भी प्रश्न अछि हमें अपेक्षा करूछु जते देरी हो पछे तुमे पचारो खोला खोली भरे पचारो एटी गोटे क्वेश्चन थिला आस्तोष भाई को पई समस्त अछंती तुमको उत्तर दवा पई व्हाट इज स्वाडलिंग जने चार्ट रे लिखितिले व्हाट इज स्वाडलिंग बोली पचारथिले आस्तोष भाई आंसर देबे तांगु हां कहि दियो तुम कहि दियो से कवर ओके स्वाडलिंग माने एक्चुअली जोटा आमे जो पोजीशन रे पिला थाए मां पेट भीतर थिला बेले हाथ जोड़ी गोड़ भांगी की जेमती थाए सेही पोजीशन रे आमे रखिया पई चेष्टा करिया पिला को आफ्टर बार्थ सेमती रखिया पई हेले ताकू प्रॉपर नेस्टिंग दरकार प्रॉपर कवरिंग दरकार आस्तोष भाई भी कहउतले सो स्वाडलिंग माने सेही पोजीशन केमती पिला पाइबो दैट इज द पोजीशन एवं गोटे कथा मु एटी कहबी खाली आमे एसेंशियल रे जे एटा केयर नबा सेमती नाही दिस केयर शुड बी अवेलेबल ऑल ओवर न्यूबॉर्न पीरियड माने नॉर्मल न्यूबॉर्न माने जते बेले डिलीवरी हि सारुचंती आफ्टर दैट पोस्टनाटल वार्ड रे मध्ये हमर दीदी माने एटा जानिबा दरकार जे केमिति कम साउंड हबो कम लाइट हबो न्यूबॉर्न पई मां पाखरे बेसी समय रहइबो बेसी लोक ता भितर एंट्री करिवे नै एवं इन्फेक्शन केमति प्रिवेंट करिवे देन जिबा पूर्वरु डिस्चार्ज हेकरी से माने काउंसलिंग ठीक भाबरे हेइथिबे जे घरे जाईकरी किपरि जत्न नै परिबे ठीक भाबरे पिलार डेवलपमेंटल सपोर्ट मिलिबो ताकू डेवलपमेंटल सपोर्ट केयर पे एथिबे हम ए टॉपिक ता रखिथिलु एवं आस्तोष भाई बहुत बढ़िया भाबरे बुझेले मु आशा करबी सब दीदी माने हमर बुझी जाइचंती ए विषय रे एबे दीनबंधु सर किसी के जने पचारथिले सोरिष तेल कथा सोरिष तेल लगेबा के नै काहे के लगेबा नै जदी न लगेबा जदी कोकोनट ऑयल इज अलाउड व्हाई नॉट मस्टर्ड ऑयल केते थर लगेबे सेटा बिछला सेते केते थर लगे थरे ना 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 व्हाट अबाउट मस्टर्ड ऑयल से पचार चंदी मस्टर्ड ऑयल लगेबो की मस्टर्ड ऑयल इज सो दैट इज इरिटेंट ऑयल सेट पे हम लगेबा नै स्किन पे इरिटेशन करिवो किछि स्टडी इज देयर एनी स्टडी किछि अछि कि हमरो
हाँ मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी लिखा है, इट्स इरिटेंट बोली। बस कह दियंतु the clear message should go the baby should, we should use coconut oil not mustard oil for massaging. Yes. Yes. नमस्ते, हेलो। Yes. हाँ कुहतु शुभुची unmute को unmute करी कौन कौन पचारुथिले पचारंतु। ओके मीना मैडम ओवर टू यू। हां एथिरे गोटे सर ए जो डेवलपमेंटली क्वेश्चन पचारचन देखंतु जणे के पचारचन क्वेश्चन जे डिस्चार्ज हैला पर संगे संगे तेल मालिश करिवे की ए संगे संगे जणे के पचारचन चार्ट रे। हां पचारचन डिस्चार्ज परे बोली से पचारचंती किंतु हमर जहा वर्तमान डिस्कशन हला डिस्चार्ज संगे तेल मालिश रो कोनोसी संपर्क नै मैसेज रो massage can be done at any time once the baby is stable. Discharge हला पर तो निश्चित करिवे मैसेज, there is no सर मोर गोटे प्रश्न अछि से तेलटा नाही पाखरे लागिले कि विपद अछि ना नाहीटा कंचा थिबो लाही को अवॉइड करले बेटर मैडम। लाही को कर देबे काहे कि देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल बी देयर, सेति पय त हमें कहू छ यूजुअली कॉर्ड फॉल हला that after cord fall and after the child will be totally stabilized तापर जाके मैसेज करिवे, that will only developmental care, that is a developmental care, that's also can be done in the SNCU, but once the child will be stabilizes off from all instrument, child will be in mother's for KMC only, then you can do message सेबे to करि पे। तापर जो डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर ता हमें डिस्कशन करले समस्तंकर आईडिया न हो जे इट इज ओनली फॉर लो बर्थ एंड प्री टर्म्स, इट इज फॉर ऑल द न्यूबॉर्न, all babies, yes, for the all the newborns for better ame usually move what I am personally doing, I am going to 3 to 4 nursing homes here and there occasionally, every day I am going 1 or 2 nursing homes, so I have developed a idea of this nesting and everything there also. आपण जोठी भी प्राइवेट को जाउछथि जोठी भी पिलाटे देखुछथि यू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग प्रोपेगेट हिजिबो ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट एवरीबॉडी शुड नो द प्रोसेस ऑफ इन्फेंट रियरिंग और न्यूनेटल रियरिंग सो दैट मेसेज टा हेले कोनी समझ जाने देबे सेम मेसेज सबड़ी जीवो, सो धीरे धीरे लोक पीपल विल एक्सेप्ट इट एंड सिस्टर्स विल एक्सेप्ट इट। मैडम एठी गोटे मो एक्सपीरियंस मोर कहबी, आई हैव विजिटेड केएम हॉस्पिटल मुंबई रे तांको मैटरनिटी वार्ड को जदि आपण जिबे 20टी मदर विथ बेबी थिबे एवं सबु बेबीଙ୍କ देह घोड़ा हैथिबो मुंडठु गोड़ पर्यंत, तनु 21 नंबर मदर जदि एंट्री करिवो से रूम को से आपे आपे सिखि जीवो बा जानि जीवो जे मो पिला खोला रहबा उचित नहे, जोटा कि हमर सब पोस्टनाटल वार्ड मानन करे एटा प्रैक्टिस होउनी एवं एथिरे बेसी रोल होउची हमर ऑब्स्टेट्रिशियन मानन कर एवं स्टाफ नर्सेस जो माने काम करचंदी पोस्टनाटल वार्ड रे तांकर, तेणु एटा जदि आमे स्ट्रेंथेन कर दबा ताहले सिकनेस कमी जीवो, आमे सिकनेस करि कि आमे ताको एसएनसी को पठेबा अपेक्षा सिक हबनी बेबी प्रथमे प्रिवेंट करि परिबा। खरा दिने भी पूरा मुंडरो गोड़ पाद जाय घोड़े ही रहइबो। यस मैडम सब बेले बेबी रो हीट लॉस मुंडो आ पादरु बेसी हुए, मुंडो विंटर रे ठीक अछि किंतु नाइ मैडम आपण हाथ लगेबे मॉर्निंग आवर्स आर वेरी कूल मॉर्निंग आवर रे बहुत कूल हो जाय खरा दिन रे, वेरी कूल फॉर द बेबी। नहीं दैट कैन बी असेस कर परिबा, आमे पेट रे पिलार हाथ लगेबा पाद रे हाथ लगेबा, निज हाथ को जदि ठंडा लागु छै आमे जानिबा बेबी ठंडा अछि, से खरा दिन हो कि शीत दिन हो, यदि बेबी एक्टिव अछि एवरीथिंग इज नॉर्मल टेंपरेचर इज नॉर्मल ताहले कोन पूरा घोड़े ही रखिबो गोडर मुंडा जाई। आमे मैडम ड्रेस पिंदुछु खरा दिने लाइट ड्रेस पिंदुछु, आमे लाइट ड्रेस पिंदेबा ताकू लाइट ड्रेस पिंदिवे किंतु पूरा मुंडो पाद मोजा फोजा सब पिंदौचंदी पिंधा नहीं होउची देखिकरी हमें करबा। बेबी जेते बेले हमें देखु जे हाइपोथर्मिया कॉमनली हुए बेबी कर न्यूबॉर्न कर, तेनु हमें हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करिया दरकार। इवन खरा दिन जदि आपण पंखा देई दिचंती पंखा तळे पिला सोईची ताले से हाइपोथर्मिया हेई जबार संभावना बेसी। टेम्परेचर बाहर बढ़ी गले मध्य आम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ुनी, आम बॉडी टेम्परेचर से 37.5 रहउची
ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ 37.5 ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ 37.5 ନାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ ନାଇଁ ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ହବା ଯାଏ ପୁରା କଭର କରି ଆମେ ରଖିବାକୁ କହିବୁ? ମିନିମମ୍ ତ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିବା। लो बार तो एटा ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା। ସେ ତ ଅଧିକ ଦିନ ହଁ 1 मंथ पर्यंत निश्चित न्यूबॉर्न पीरियड टा पूरा रहइबो से कवर हेकरी 1 मंथ पूरा ए आदित्य सर टिके इंटरवेन करबी आज्ञा सुनंदु सीधा कथा होची सिचुएशन जोटा आपण कहले सिचुएशन देखिकिरी मैडम करिवे सस्मिता मैडम जदि खरा दिने बेसी गरम होची ताको लाइट ड्रेस पिंदेबे सीधा कथा देखि जो आदित्य सर कहले हाथ टच करी देखिवे पाद आ देह टच करी देखिवे जदि बेसी गरम अछि सेठी स्वेटर फटर के गुडा पिंदा जमा आवश्यक नै करा दिने ए जोटा आपण कहउचंदी शीत दिन पे स्वेटर दरकार कि मोजा दरकार कि ये दरकार किंतु खरा दिने आपण मदर रो बेस्ट माने जजमेंट ऊपर सब निर्भर करे से देखिकिरी सिचुएशन देखिकिरी से कंट्रोल करिए किंतु ड्रेस टा सब दिन खरा दिन हो कि शीत दिन हो पिंदे दैट इज ए ଆମର ବେସିକ ଆଇडिଆ ହଉଛି ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ସୋ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ଅକର୍ସ ମୋର ड्यूरिंग विंटर एंड कोल्ड सो ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆମେ ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍ ମଦର ଅଛି ଆମେ ଖରା ଦିନେ କଣ କହିବା ତାକୁ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧା ବୋଲି ନାଇଁ दैट इज नॉट द बेबी शुड बी कवर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम heat loss and hypothermia should be prevented that is the basic aim so वर्तमान मैडम कंक्लूड करिवे नाउ कंटिन्यू करिवे मीना मैडम किछि कहियो कुहंतु मैडम हां मैम सेटा ही कहउतली दैट एसेंशियली वी नीड टू कीप द बेबी कवर्ड आ जेहेतु ऑब्स्टेट्रिशियन हमरो राउंड दियंती पोस्टनेटल वार्ड हैला लेबर रूम हैला सेही समय रे ही जदी टिके गाइड कर देबे ताले निश्चय मां और फैमिली मानिबे सेटा टिके जदी गाइड कर देबे कि नाइ रे किछ लगेबेनी कीप द बेबी कवर्ड है सी देबे एतकी जिंस हम जदी टिके गाइड करि दबा सेही समय रे देन इट विल बी यूजफुल सर एठी गोटे क्वेश्चन थिला कैन यू इलाबोरेट ऑन एनएनएस एटा कोन नियोनेटल सेप्सिस कथा कहउतले सर ना 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 गोटे क्वेश्चन अछि चैट बॉक्स रे एनएनएस ममता जेना एनएनएस इज नॉन न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग रे जो कार क्षीर कम हुए बा लो बार्थ वेट बेबी जो माने सक करि पारंती नाही सेमानंकु कटोरी स्पून रे दबा सहित बा ओजी ट्यूब फीडिंग दबा सहित बेबी रो माउथ टच करिया दरकार निपुल को सो दैट निपुल स्टिमुलेशन हबो এবং प्रोलैक्टिन रिलीज हबो फर्दर इन फ्यूचर जेमती तार मिल्क सिक्रेशन बढ़िबो so that's why this is applicable non nutritive sucking माने ताको न्यूट्रिशन मिलु नथिबो किंतु सकिंग करबा दरकार बेबी एवरी 2 आवरली नहीं सर आदित्य सर एठी सर मन रखिया कथा जे से माने पासिफायर केबे भी यूज करिवे नाही जोटा बाजार रे मिलुची पासिफायर सर केबे भी यूज करिवे नाही हमर एटा पेन रिलीफ मैनेजमेंट रे गोटे टर्म टे हमर आशुतोष भाई लिखिथिले सेही कथा पासिफायर सेटा इट इज नॉट रिकमेंडेड यस आ गोटे क्वेश्चन अछि व्हाट इज द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वासा प्रीविया यस यस कीर्ति मैडम कोन मैडम अनम्यूट करंतु मैडम अनम्यूट करंतु अनम्यूट Vasa previa can be diagnosed by ultrasound Doppler. Doppler रे आपण placenta membranes and that membranes time placenta and the vessels can be seen. आउ पीवी कला बेले जदी आपण देखो असोपन अछि बिफोर मेम्ब्रेन रप्चर्स जदी वेसल ता हाथ को फील हैला भी दैट कैन आल्सो बी यू कैन डायग्नोज सेमती भी डायग्नोज करि परिबे किंतु अल्ट्रासाउंड होची डायग्नोज करिकि ताको जदी इलेक्टिव सिजेरियन करिवे त प्रोग्नोसिस इज बेस्ट आ नॉर्मली सक्सेस रेट लो गोटे थाय आदर बते नहीं क्लिनिकली हेले क्लिनिकली एक्चुअली तीनटा चारि टाइप रे वासा प्रिपेयर हुए गोटे होची बाइलोब प्लेसेंटा जदी रहिला बाइलोब प्लेसेंटा गोटे लोब रे इंसर्ट हेइथबो सेइटु वेसल गुडा जाई आरो लोब को जाइथिबो किंबा सक्सेंचुरिएट लोब थिबो छोटो लोब आ पूरा बडटा किंबा भेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड माने गोटे प्लेसेंटा किंतु कॉर्ड ता इंसर्ट हेइथबो मेम्ब्रेन रे सेइटु वेसल गुडा आसी प्लेसेंटा को आस्ते ए तीनटा कंडीशन रे भाषा प्रिविया हुए एंड दिस कैन बी डायग्नोज्ड बाय अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर
और ଆଉ ଗୋଟେ ପିବି କଲା ଆଗରୁ को ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କି 30 सेकंड पର୍ଯ୍यंत ଯଦି ପିବି କରିକି ହାତଟା ରଖିବେ ହାତରେ ପଲ୍ସେସନ ଟା ଜଣା ପଡିବ ଯଦି ପଲ୍ସେସନ ଟା ଜାଣି ପାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ and definitive diagnosis is after delivery Vasa Previa pulsation I have seen those placentas ARM କରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ARM କରିବା ଆଗରୁ ଆଡଭାଇସ୍ ହେଲା ପିବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପିବି କରିକି ଟିକେ ଫିଙ୍ଗର ଟା ରଖିବେ ଯଦି କିଛି ପଲ୍ସେସନ ଫିଲ୍ ହେଲା ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ଇଟ୍ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇଛି ସ୍ପେକୁଲମ ରେ ବି ଦେଖି ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବେ ARM କରିବେ ନାହିଁ ARM କରିବେନି normally Vasa Previa बहुत rare, it's extremely rare तापरे डायग्नोसिस भी रेयर ARM रो हैबिट टाकू हमें अवॉइड करबा दक्षता अनुसार प्राय ARM रो केस नहीं कोठी केवल एक्सीडेंटल हेमरेज रे डेड बेबी अछि बा पोस्ट डेट रे हमें करियो हां बा ये सर्विक्स ऑलमोस्ट फुली डायलेटेड अछि एक्सीडेंटल हेमरेज रे एटा करि हबो मैडम पोस्ट डेट रे तो ARM करिके देखिबो ना सेगुडा करियो पड़छि तमे ARM करिके सेटा अछि टर्शियरी सेंटर इट इज नॉट टू बी recommended in ये in the ये CHCPSC रे करिवे किनो करिवे जदी बाय चांस भी हला हाथ देकी 30 सेकंड्स फील करियो पल्सेशन जदी अछि ताले करियो नाही आदम ARM पूर्व तो करिया कथा आगे फील करिया कारण कॉट ता अछि भेसल टे अछि भाषा प्रिविया अछि कॉट ता अछि कॉट प्रोलैप्स हे जिवो त निश्चय ARM करिया पूर्व it is always ideal advisable to do PV and keep your fingers there for PV आ जदी ARM पर ब्लीडिंग हैला ताहले संगे संगे फिटल अल्ट्रासाउंड सुनिबे जदी ARM पर फिटल अल्ट्रासाउंड वेरी कला कम गेला के बढ़ी हैला ताहले यू मे थिंक अबाउट भाषा प्रिविया आल्सो तो प्रति मेम्ब्रेन रप्चर कला पर फिटल अल्ट्रासाउंड निश्चय सुनिबे and it can be only done where facility for cesarean immediate cesarean is there otherwise attempt करिवे नाही हां हमरो बहुत पेडियाट्रिशियन एवं ओजी स्पेशलिस्ट सीनियर ओजी स्पेशलिस्ट माने जॉइन करचंदी ग्रुप रे जदी के चाहउचंदी किछि सजेशन दबा पे देई परंती मीना मैडम फाइनल करबे आ तो कहार आसा we can close ma'am thank you very much बहुत patiently बहुत भलो रे द practical points और practical issues गुडा को बुझेले and आशुतोष भाई as usual was very captivating माने point to point हमरो basically आमे चेष्टा एठी करूचे प्लेटफॉर्म रे that amaro CHCs PHCs SNCUs सबु जो staff nurse माने medical officers माने pediatricians obstetricians they're doing excellent work in all the difficulties among and in the constrained conditions so what is the additional input ame tanku practical guidance ki practical suggestions ame kon dei pariba and how do we ensure that ame more and more mothers will be able to save like madam jemti ago kahile ame jodi SDG goals of less than 70 को achieve karibar achi I think these small inputs ame jodi dekri au tikke care noba I am sure definitely mortality will come down neonatal ho ki maternal ho definitely it will come down and we are treating on this platform mother and the newborn as one single unit जोठी कि हमें मिसिकरी as an obstetrician होंतु कि pediatrician होंतु staff nurse होंतु as an entire team let us try to save these babies I am sure we will succeed so I thank again the resource persons and all the experts participating we have many senior experienced and seasoned people who have worked a lot in the field जे कि हमको बहुत suggestions आउ एटा को केमती हमें address करिवा केमती improve करि परिवा हमको दे दउचंती suggestions so I am very much thankful for them I am thankful for all this support and we hope to continue these learning sessions it's a mutual learning actually बहुत जिंसो आमे सिखुचे field रू सिखुचे आमे भी आउ जणो को सिखोचे so I am really looking forward to these weekly sessions आमे आउ next week को आउ थरे आउ गोटे नुवा टॉपिक नेकरी we will come forward Ritanjali madam किछि कहबे next topic आउ मु before we close Ritanjali will announce the topic for next week आउ गोटे होची आमे birth companion कथा भूली जाउचे we are always understaffed birth companion को संगेर नबार अछि से सबटु closest मारो से निजे delivery process through रे देइकिरी जाईची मे respectful maternal care रे गोटे session रखिबा या परे परे किछ दिन परे
सो बर्थ कंपेनियन को तुम मैंने भूली जाओ नहीं आशा अंगनवाड़ी वर्कर ये डिलीवरी पॉइंट सब अच्छो मेडिकल ऑफिसर्स आयुष डॉक्टर्स बर्थ कंपेनियन को सब बळे एंटीनेटल आउटडोर थरु ही संगे नबो ए सब जहां हमें सब शिखुचे जणैबो मैडम एनीबॉडी फ्रॉम द मैडम मीना मैडम मु कहतली हमर हम सर पीके साहू सर अछंती वेरी सीनियर पेडियाट्रिशियन एंड एक्सपीरियंस पेडियाट्रिशियन व्हेन आई वाज इन जुनागढ़ as a roaring practitioner with Dr. Kichi Pradhan. So next session tang gote dia jao about this his practical experience related to any of our subject, so that we will be happy to listen from him. Yes, very good suggestion. Very definitely sir, very good suggestion. We are very much encouraged because he joins our webinars. Prasanna sir, thank you very much for coming. And thank you so much, sir. We look forward to your guidance. He is the president of IAP Odisha, and he has. Will definitely like to Aditya tangu jemte hele gote forum re se kahibe tangar experience. आमे नहीं आसबे मैडम सर को गोटे सेशन में आसबे आज्ञा नेक्स्ट हमर कहता ओजस्विनी मैडम कहिबे एनीमिया इन प्रेगनेंसी परे डॉक्टर ओजस्विनी पटेल एसएस मेडिकल कॉलेज रो से गायनिक रो कहउचंती एनीमिया इन प्रेगनेंसी आ पेडियाट्रिक्स हम डिसाइड करबा सार के करिया पे सार को नेक्स्ट कोन एबे कहूना आदित्य प्रसन्न सर कोन आज्ञा आशु भाई आमे कथा हेबा को टॉपिक ऊपर करिया कथा कथा आमे कथा हबा आमे कथा इकरी वर्कआउट करतो डीएफडब्ल्यू को टिके मोर रिक्वेस्ट सिस्टम मानु को सब इंफॉर्मेशन पठौती से माने डिस्ट्रिक्ट रो कम होती है डिस्ट्रिक्ट रो यदि पार्टिसिपेट करन कोनता आपण सुना गला कोन कहले मु कहली सुबुनी एबे हां सुना गला सुना हां जे मु एई जो वेबिनार रो इंफॉर्मेशन सब सीडीएम मानु बाबू पठौची पूरी छडा आ समस्तंकर व्हाट्सएप अछि किंतु से माने तांको डिस्ट्रिक्ट रो जदी पार्टिसिपेशन होता नंबर बहुत औरी अधिक होता माने एते इंपोर्टेंट वेबिनार गुडा मिस करछन तांको डिस्ट्रिक्ट रो प्रोवाइडर्स माने we are many from all zones. को information दिया जाଉଛି को आहुर कोन information मागिबे कि कैसे बोलनी प्रत्येक हां को जिला आसुना दी हमें विटनेस देयर ओपिनियन टू व्हाट इज द प्रॉब्लम जानी हबो हां जान करी हमें प्ले करि परिबा किबा ताको रिकॉर्डिंग दे दे परिबा से माने जते बेले कन्वीनियंट प्ले करि परिबा हां हां कह देबो ठीक है दैट कैन बी डन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स ओके श्योर सर हमर आरआरसी रो साइट रे अछि जते वाइड कवरेज होबो सेते बेनिफिट होबे माने इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन मोर्टालिटी मोर्बिडिटी आई थिंक मैम दिस इज वन अपॉर्चुनिटी जे हमरो एते एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स आसुचंती एते भलो भलो एक्सपर्ट्स आसुचंती इट्स अ ऑनर टू बी लिसनिंग टू देम आल्सो काहे ना फील्ड रे जनरली आमे तो पाउ ना इन पीएचसी कोंतु कि सीएचसी कोंतु इवन डिस्ट्रिक्ट कोंतु वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू सच एक्सपर्ट्स एग्जैक्टली सो दिस वी शुड ना एक्चुअली हमें प्लान करिछु हमरो जेबुठू हमें स्टार्ट कलु ए जोटा कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म वर्तमान हमें रिव्यू करछु व्हाट इंप्रूवमेंट वी आर हैविंग तार कोन माने को मार्कर रे हमें इंप्रूव करछु दैट हैज टू बी सीन तेनु आउ 2-3 मास परे हमें देखिबा एक्सेस करबा जे व्हाट इज द इंपैक्ट तार इंपैक्ट कोन होछ अदरवाइज वी विल चेंज द मोडालिटी जदी किछ इफेक्टिव हो नाही ताहले वी हैव टू चेंज द मोडालिटी लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग
सर आमे because एमती गोटे करि परिबा everything सर is ए कोविड ପାଇଁ ସବୁ ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ Exactly, ସେଇଥିରୁ ହଁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଲାଣି ଏବେ onwards ଦେଖିବା because our year ending is March, so during this 5 months what achievement we are getting, that has to be analyzed and reassessed. We then we will evaluate ourselves what has been done and what should be done. Sir, So sir. thank you. With this सर I आमे think you सर can गोटे conclude. चेकलिस्ट कर दे कि सर हम हाँ थैंक यू सर आमे सर गोटे चेकलिस्ट कर दे कि रैंडमली टीम्स कुड गो एंड सी लेबर रूम प्रैक्टिसेस गुडा को देखिले सर जणा पड़ जिवो एंड वी विल सी आफ्टर अ पीरियड ऑफ एवरी 3 मंथ्स हमें क्वार्टरली भी जदी देखि दबा हमको गोटे आईडिया हे जिवो लेबर रूम प्रैक्टिसेस बा न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिसेस कोन चेंज आसुची सर दैट इज डुएबल सर that's a हमें good सैंपल idea. हिसाब रे रैंडमली देखि दे Right. Meena madam, there is a question from Sir, some sir. participant in the chat box. That is an administrative one. Panigrahi sir, please see that and answer. हाँ of course madam all the हाँ all the nursing students madam definitely can participate किछि असुविधा नहीं madam definitely they can participate किछि problem नहीं हमें session repeat भी करि परिबा recording भी देई परिबा इथरे live भी join करि परिबे किछि problem नहीं madam it will be helpful actually they are very much welcomed. absolutely हमें nursing director madam को भी मु सर बहुत गुडा को share करि छि actually links गुडा को अच्छा so that nursing colleges को भी हमें देई परिबा nurse mentors भी जो जाउ चंती से माने भी participate करंतु nursing students भी आसी होबो तापर every मु जो information पठौछि every कोई nurses आयुष doctors anybody conducting delivery should participate. exactly ठीक ठीक अछि करि परिबे किछि प्रॉब्लम नै absolutely most welcome. it's a knowledge sharing platform ma'am anybody can participate it will be very helpful किछि असुविधा नहीं and across private and public sector private sector भी बहुत जण experts आसकी कथा कहि छथि they have taken sessions so there is no bar public sector private sector nurses ayush medical officers specialists जे भी मैडम participate करि परिबे we'll be very happy. Okay, shall we call Thank it you a day? sir, we will conclude for today. Yes ma'am, thank you so much, thank you everybody Thank you, again. Thank you sir. Thank you. Thank you ma'am, thank you. Thank you everybody. Bond on.